the waste, but what's been burning? I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher, till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher, till it feels like I can walk through fire. Alright. एक सेकेंड, लास्ट गेम इस पे आई थिंक यही होना चाहिए, हॉगवर्ट्स लेगेसी. यस. आज थोड़ी हॉगवर्ट्स लेगेसी की लंबी स्ट्रीम करेंगे. मोस्टली 6 घंटे आज मिनिमम हम लोग हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलने वाले हैं. एंड देन आफ्टर दैट TKRP. कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू. इसकी ग्राफिक सेटिंग ना मैंने कुछ मतलब मैंने नहीं सेट करी थी. बेसिकली इस गेम में खुद से मेरे पीसी का बेंचमार्क टेस्टिंग करी थी जब तक मैं बाकी चीजें चूज कर रही थी, और उसके अकॉर्डिंग इसने ग्राफिक सेट करे थे. स्टिल उसके अकॉर्डिंग मतलब गलत है सेटिंग. थोड़ा और लो होनी चाहिए थी. हमें क्वेस्ट करनी है, लेवल अप करना पड़ेगा ना. रिक्वायर्ड लेवल डिपल्सो इसके लिए चाहिए और इसके लिए 14 अलो हमारा. ठीक है, साइड मिशंस करते हैं फिर जल्दी जल्दी. कलेक्ट ट्रोल बोगीज, कास्ट डिपल्सो ऑन अ लेविएटेड एनिमी. डिपल्सो सीखना पड़ेगा उसके लिए. और इसके लिए venomous tentacle mandrake, acquire and use a mandrake on multiple enemies. Pop balloons over housemaid station. Pop balloons? You want to use my broom to reach and pop them. ये वाला कर सकते हैं, ये वाला पॉसिबल है. तो एक है हॉगवर्ट्स स्टेशन. वर्ल्ड मैप खोलते हैं. एक ये यहाँ पे. इसमें मेरे को हिपोग्रिफ था या फिर वो कोई और नाम था. वही नाम था शायद से. हिपोग्रिफ था. मेरी ब्रूम क्यों नहीं आई? निकाल नहीं सकती ब्रूम. वाई ब्रूम क्यों नहीं निकाल सकती? Does it get any more cozy than Hogsmeade? पैदल जाना पड़ेगा उधर तक. You have entered a name that allows flight. Tab 3, then tab 3 to acquire. अरे okay. Never mind. मेरा गोभी का पत्ता यूज हो गया. Here's a pleasant surprise. यूज करूँ क्या यहाँ पे मर्लिन स्लीव? Revelio.
स्टार्ट। कुछ तो होगा, मैं कर क्यों नहीं पाई? मैंने कुछ अभी भी कुछ मिस कर रही हूँ, अभी भी कहीं पे ये है। Merlin himself would be proud. हो गया। Revelio. इसका रिवॉर्ड तो मिला नहीं मुझे। सैड लाइफ। नीचे कूदने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और ना मेरी ब्रूम आ गई। बलून्स फोड़ना है ना लेट्स को। एक और गया। और कहाँ है? एक उधर है, और यहाँ पे कोई और है? नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रही। उधर ही है। नहीं नहीं, झाड़ियों से मत भिड़ना। अभी भी कहीं रह गया पॉप बलून। Revelio. और मुझे बलून तो अच्छा वो रहा। हेलो स्नीकी पीकी। हो गया। अरे हेलो मैनी, मैनी एंड अर्नब एंड डेविलोपी। थैंक यू फॉर द स्टिकर्स। गिव अवे करेंगे अभी, मतलब सोचा तो है गिव अवे का, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ, डेट नहीं डिसाइड हुई गिव अवे की कब है। आई मीन लोगों पे 10 के हुए हैं तो उसके लिए गिव अवे तो सोचा हुआ है, बस डेट एंड ऑल डिसाइड करने की कब करना है।
Brilliant. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. इस बार If तो Black Quidditch है ही ever नहीं. permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Glacius. अच्छा spell pay सिखाने वाली attention दी to है. your wand work. ये spell क्या करता है? अच्छा ठीक है समझ गया नाम से समझ गया. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. कहाँ गया इसका spell? ये रहा. There you go. Catching on quickly. बढ़िया. इसके साइड मिशंस करने पड़ेंगे. इसका लेवल थोड़ा लो है लड़की का भी. क्या? एक मिनट. बढ़िया है. Yes. भाई ब्रूम मिल जाती तो सारे वो जगह पे जाना इजी है. मच इजियर. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, अरे now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Okay. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, okay. why not? I can Let's beat go. your record. I'm so looking forward to seeing you lose. भैया कहीं भिड़ना नहीं बस. Made it! Okay. It is tough. And especially if you are trying to get those points. Ouch! Okay. नहीं. मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया है. This is rather fun. 22 रिंग्स 2 मिनट और. भागो. पर इन बलून्स को फोड़ने का फायदा क्या है? अगर ये अच्छा ये बूस्ट. ओके ये स्पीड बूस्ट दे रहे हैं. दैट्स व्हाई. That's more like it.
F F F F Ah, success! काफी तेज है भाई। उधर नहीं लग रहा होगा, बट अगर नॉर्मल कोई अभी लाइक बिगिनर, एक्चुअली में कोई बिगिनर अगर ये चलाए ना तो बहुत ही मुश्किल है। चलो उसका स्कोर तो बीट हो जाएगा। रिंग मिस पेनल्टी एक भी नहीं, हरा दिया। और दीदी बोलती बन। That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. क्या हम लोग को अपना दुश्मन मिल गया? You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. नहीं चाहिए तुम्हारी रिस्पेक्ट। Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Report to the podium to challenge other races and advance your way through the ranks of the leaderboard. अच्छा। I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Hello, so hi, how are you? वैसे मैं इधर से क्यों जा रही हूँ? मैं फ्लू पाउडर भी यूज कर सकती थी, ज्यादा ही मजा आ रही है झाड़ू यूज करने में। आगे चल, थोड़ा सा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे रे, आगे बढ़ा रही थी, बढ़ नहीं रही थी, फिर अचानक से ये। Hogsmeade, here I come. Just because you know blue market doesn't mean you can't get the top. Uncle, oh, you're back with something to report, I hope. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. अच्छा। I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. क्यों Steam और Epic बात तो How सेम to ही है ना? address the issue of altitude as it relates to speed? ये मेरे ब्रूम बट ये अपग्रेड तो करता नहीं है। What are we looking for ब्रूम today? अपग्रेड्स तो इस पे होते नहीं है। Thanks for stopping by. Hope to see you. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. नहीं, और नहीं करने तुम्हारे मिशन, या नहीं करना तो पड़ेगा।
Revelio. इसके शॉप के पीछे है ये सब चीजें नहीं. हेलो साइनर जी, हाउ आर यू? What are we looking for today? आ गया ब्रूम अपग्रेड. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Oh, I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already remember begun me, yeah, work yeah, on I remember another you. upgrade. You used to help More me with difficult my to those perfect than like the last. the I muscle wondered, pains and would you be everything. interested in joining I forces mean, you again? used to give me tips. There's another course near Arendale that Miss Razor's mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. And you You'll used to consider take it, a lot won't you? of survey. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Sweeping the races, then? competition. कहाँ जाना है? वापस उसी औरत के पास. एक सेकंड, कहाँ जाना था? यहाँ आना है? इतनी दूर? बहुत दूर है तो. मैं नहीं जा रही इतनी दूर मिशन करने. हमें कोई और कर लेंगे हम. Need to attend BS class taught by Professor Ho. इतने सारे इसके क्वेस्ट हैं. Oh, I'm glad, yes. I don't know हॉग्समीड में कौन सी औरत है जिसकी आवाज मेरे को सुनाई देती है, बट उसकी आवाज काइंड ऑफ मतलब मेरे को मेरी आवाज जैसी लगती है. फिर मैं बार बार सोचती हूँ कि ये मेरी आवाज कहाँ से आ रही है. I was treating someone with same condition. तुम्हारी याद आई तो देखने आया. ओके, अभी तो मेरा सब ठीक ही चल रहा. इवन जो मेरे बैक में प्रॉब्लम हुई थी वो भी ठीक हो गई. ऑलमोस्ट. I am happy. मेरे अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. बेसिकली अब सिर्फ इतना ही है कि मतलब स्टेयर्स पे चढ़ना, जैसे कि ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, या फिर अगर कोई हैवी आइटम उठा रहे हैं. लो आर्ट्स मतलब समझे नहीं. नहीं, मेरे डिस्क हर्निएशन थी. हर्निएटेड डिस्क बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में. हेलो जी, हेलो क्वेश्चन. एमआरआई करवाया था, उसी में निकली थी हर्निएटेड डिस्क. Seems a pleasant एक्सरे में बेसिकली जो डॉक्टर था, एक्सरे में उसको कुछ गड़बड़ी लगी थी और फिर उसके बाद उसने हर्निएटेड डिस्क निकली थी. पहले तो उसको लग रहा था इन्फेक्शन है, फिर उसने एमआरआई करवाया, उसमें हर्निएटेड डिस्क I have थी. a delivery from J. Pippin's Potions.
Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. उससे कैसा बढ़िया हूँ आज तो लंबी स्ट्रीम करने वाले हैं. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. मैं पोशन कैसे पीऊँ? इनविजिबिलिटी वाला था ना इसका? नहीं कहाँ गया? अरे गलती से वो हो गया. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills. Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. I mean exercise and all मुझे सिखाई थी तीन चार नहीं मतलब काफी एक पूरा set of exercise सिखाया था वही बोला था. What do you have for sale? What are we looking for today? ये सब तो मेरे पास already है. Thank you for stopping in. I appreciate it. यहाँ पे पास में हाँ दिख गया. Handy resource indeed, your field guide. मुझे देख के पता लग जाएगा. मतलब मैंने करा तो था कंसल्ट डॉक्टर्स को बट उन्होंने एक्सरसाइज एंड ऑल बताई मेरे को बोला कि वो करो तो फिर मतलब ठीक हो जाएगा. बाकी तो मैंने कुछ उसमें खास करा नहीं. मतलब एक्सरसाइज करती हूँ उसके अलावा उसमें कुछ मैंने खास करा. फिजियोथेरेपी जब तक कर रही थी फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं मिल रहा था. मैंने एक्सरसाइज जब ढंग से शुरू करी तभी ठीक हुआ. नहीं होना चाहिए अदरवाइज नी पेन भी स्टार्ट हो जाएगा. नी बल्ज पता नहीं. नी में तो आज तक मेरे कोई प्रॉब्लम आई नहीं ऐसे तो कभी. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. अनआइडेंटिफाइड आइटम ये तो मैं अपने स्टोर में जाके देख. एक सेकंड. Revelio. Revelio. The back is not supporting the back of name cast question आएगा. आई थिंक वो मेजरली उससे हुआ होगा जो मैं घंटों घंटों तक 12 घंटे मैं रोज ही मतलब 12 या फिर 14 घंटे इतने घंटे स्ट्रीम कर रही थी. तो मैं तो स्ट्रेन तो डाल ही रही थी ना डायरेक्टली अपने बैक पे. अब मैंने कम कर दिया है बहुत. मतलब अगर मेरे हल्का सा भी लगता है कि हाँ आज हिम्मत नहीं तो मैं नहीं करती फिर. मेरा वो वाला कमरा कहाँ पे था?
क्या करना था? ना हम हैं ही हेल्प के लिए, वो तो है स्ट्रीमर्स लाइफ। नहीं, मैंने बीच में बहुत ही ज्यादा बैक पे स्ट्रेन, आई मीन आफ्टर स्ट्रीमिंग एज वेल, मैं सोती तो थी नहीं एकदम इंस्टेंटली। मैं डिस्कॉर्ड पे कोई मूवी या सीरीज देखती रहती थी, तो वो भी मतलब ऑलमोस्ट बैठे बैठे ही देखती थी, लेट के तो देखती नहीं थी। मतलब चेयर को मतलब पीछे करा और देखना शुरू कर दिया मूवीज एंड ऑल, तो फिर वो रेस्ट मिलता ही नहीं था ना, एक्सरसाइज के नाम पे मैं कुछ नहीं करती थी। पेड है क्या? हाँ, ये वाला पेड है। टीम से लिया हुआ है ये वाला। Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's No वालो ambience. Of नहीं, अभी course. वालो नहीं है। What आप sort भी ये of रिसेंटली overall look पहले most हॉगवर्ट्स appeals लेगेसी to खत्म you? करना है। I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. ये बेसिकली अपना इस गेम का डोबी है, डीक। मैं डोबी क्यों बोला? डॉबी नाम है उसका। Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it गेम back. अच्छा मत, तभी तो Now खेलना। you अभी have मैंने learnt a कल good इतनी, bit मैं 2 about दिन ये खेल चुकी हूँ और अभी सिर्फ Thank you, 7% कंप्लीट Professor. हुआ है। The room is full of गेम बहुत possibilities. बड़ा है। Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. अब ये क्या है? दूसरा रूम खुल गया। अरे और बड़ा हो गया। An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. इतनी बड़ी, हाँ If और you'd बड़ी like to होगी। customize the हाँ, space 2 further, दिन मैंने you can use these spellcrafts. ऑलमोस्ट मान लो You'll 8 find या more 10 of them घंटे both inside उसको and टाइम outside होगा the शायद school. से, कितने घंटे Thank you, खेला। Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. इनका वाला मिशन भी हो गया। It warms Deke's heart to see a student so comfortable. बढ़िया। वैलो आजकल मैंने बहुत कम कर दिया। वैलोरेंट मतलब बेसिकली अगर रात को सोनिक लोग और सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं तो फिर खेल लेते हैं, अदरवाइज वैलो के मतलब ठीक, क्योंकि साथ में मैंने और भी अलग अलग गेम शुरू करे हैं। इससे पहले मैं असैसिन्स क्रीड खेली थी, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हॉगवर्ट्स लेगेसी आ गया था, तो इसको पहले खेलना था प्रायोरिटी पे, तो वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था फुल्ली। Off on another adventure, are we?
उसके अलावा आरपी शुरू करी थी, तो आरपी तो मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों पे खेलती हूँ, बट खेल तो रही हूँ ना फिर भी। और अभी अगर टाइम मिलता है कभी कभी आरपी जब करने का मन नहीं होता तो फिर वैलोरेंट। already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Bye-bye. Finally, stay safe. Yes, just taking care of myself after that You can incident. practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his Tap experience. and then hold the beast petting brush. Hold and drag it to a spell. Spell set? That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Already इतनी कम space है उसमें सब ठुसवा दो तुम लोग. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Stretching and lower leg strength. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? This way. The measles are over here. ये बिल्लियाँ टाइप की? Oh, couple of measle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. अरे क्यों खींच रहा है उसके बाल? What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone. Her name is Persephone. पीछे पीछे Ravenclaw लिख देगा. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. सबके सब सेम ही खाना खाता है क्या? They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. इसका क्लोक पूरा उड़ा जा रहा है हवा की वजह से. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly. Hello, Jaydev.
which does not Hello Vicky, sorry include my bad, torturing my them bad, for my bad. whiskers. मैं गेम में ज़्यादा खो गई थी. Well done, by the way. I am sorry. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the हम याद है कि भूल गए, savages याद in है, याद है, Rookwood's याद है, याद है. poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay यार, काम पे काम देते जाओ बस. I need to talk to you. Come here. अब आपको भी बात करनी है हमसे. हाँ बोलिए दीदी. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we ये decided लड़की it मुझे meant. अच्छी लगी. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. किसी जानवर से मिलेगी. चलो 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 चलो. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. भाई ग्राफिक Pleasant surprise. प्यारे लग रहे हैं इस टाइम. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. वो आने वाला है क्या? हाँ सही समझा. आ गया. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. अब वो भी झुकेगा. अच्छा और झुकना है क्या? हाँ वो भी झुक गया. अब उसको छू सकते हैं. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. ये भी ठीक है. इसको अभी हम लोग उड़ा भी पाएंगे जहाँ तक मुझे फीलिंग है. अच्छा अभी नहीं उड़ा सकते बट बाद में उड़ा पाएंगे क्योंकि आई थिंक होना चाहिए. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently.
You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howard, but on that, I fear she's right. Minister The मतलब इनकी poachers' नल्ली है. influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. अभी और कौन-कौन से मिशन बचे? Quest. The caretaker. Talk to Gladwin Moon. अच्छा हम लोग अलग हमारा सीख सकते हैं. Level 5. Thank you for the stickers, विक्की भैया. विक्की वो क्यों बोला मैंने? जयदेव. I know that is you from Dilip name. Yes, probably resident. Stop by the shop when you can. Sam, you learned. Yes. Arresto Momentus, the slowing charm. क्वेस्ट पे क्वेस्ट खुलते जा रहे हैं. इतने क्वेस्ट हो गए कि कितने करें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कब करे जा जाके. क्या है? मुझे लगा मैं ले सकती. Hello, sir. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. ये हम लोग को ताले खोलना सिखाएगा. अब हम लोग लॉक्स खोल Please allow me सकते to हैं. apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. So you are telling me इसके प्रोफेसर और इसने पूरे दिन बैठ के इंतजार किया इस बंदर की लाइट चेंज होने के लिए. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally,
can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone seems trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Oh, yes, sir. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. सब हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा. Thank you. Space F मिस कर दिया मैंने. पहले तो मैं अपने सारे स्पेल्स वापस लाऊं जहां वो थे. कॉन्फ्रिंगो. हाँ, ये पहले ये एक ये था मेरा अच्छा वाला स्पेल और एक ये था. और अभी इसने कौन सा सिखाया मेरे को? ताला खोलने वाला. कौन सा सीखा मैंने? कहाँ गया? मैंने जो सीखा वो कहाँ गया? क्या डायरेक्ट F दबा के? Alohomora. Move the spikes and rotate the dials until both are activated to release the lock. What?
थोड़ा कंफ्यूजिंग था. Well done. You're in. मैंने क्या किया मुझे खुद नहीं Use a पता. disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a the castle. Cast handler reveals authority figure the enemy allowing it to scout ahead. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddle capable. F. He saw me kind of. This must be the prefect's bathroom. Hello, Amora. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Brutes. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have Oh, bubble. If those goblins comes near me, I'll hand him his... or hell, so. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Hecat's class are superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins... Revelio. That's it. 50 health points. Hello, Amora. Oh. How nice to see you, my young friend. Students in the hospital wing on account of my venomous fantastic. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules.
It's a linguistic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teeth and flying about and the golden ditch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match. If there are... Revelio. I suppose you should. Surely you have better things to do than risk detention by wandering where you shouldn't. पकड़ी गया लग रहे थे गेमिंग बहुत जल्दी रिप्लाई मैं तो कब से तुम्हारी बातों का रिप्लाई दे रही यार नहीं यार नहीं पहले निकल जा बेला वुमेन आईपीएल ऑक्शन देख रही हो नहीं देखा अभी आरसीबी में गई नहीं मैंने अभी नहीं देखा टीचर चली गई क्या आइए उधर ही देखना मैम आप उधर ही देखते रहना हम बस जा रहे हैं इजी 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 उधर देखो वो देखो चिड़िया जा 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 यहाँ पर मुझे कुछ सुनाई दे Hey. उधर देखो चिड़िया पीछे देखो गुड बॉय निकल गए बस हो गया चलो भैया तुमने बहुत Hello, Mr. Moon. गलत काम I have कराया the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the ones who asked for help. Keep at it so we can solve this mystery. एक यहाँ पे दूसरा इसका वो कहाँ है फिर कहीं तो होगा दूसरा वाला नीचे है अभी एक सेकंड ये खुले हुए हैं क्या नहीं खुले तो नहीं है चलो छोड़ो हमारी क्वेस्ट थी ना एक सेकंड मुझे चीजें मिली थी डाउनग्रेड
यार ये नहीं लगाना यार, इससे अच्छे मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ये तो कूड़ा लगता है भाई कसम से। ये भी ठीक है। डिपल्सो डिपल्सो सीखने के लिए यूज अ पोर्शन, फोकस पोर्शन बनाना पड़ेगा वो तो, और उसकी शायद से रेसिपी भी सीख के आनी पड़ेगी। अब मैं भूल गई कि वो वाली क्लास कहाँ थी। ये तो ट्रॉफी रूम है। एस्ट्रोनॉमी डिफेंस अगेंस्ट प्रोफेसर फेक, यहाँ नहीं है। अच्छा इधर ही पोर्शन की तरह। शायद से मुझे जाना पड़ेगा खरीदने आइटम, वो फोकस पोर्शन का स्क्रोल लेने जाना पड़ेगा। यार इन लोग को देख के बुरा लगता है। ये मतलब लाइक हैरी पॉटर मूवी में नहीं दिखाते ये चीज, बट ये इसमें दिखाते हैं। बुक्स में भी था ये, बुरा लगता है। You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ये पोर्शंस क्लासरूम है। हाँ यहाँ है। मैक्सिमा Revelio. इसमें रात से दिन कैसे करते थे मैं भूल गई। रात से दिन कैसे करते थे इसमें? Hogsmeade, here I come. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. ऐसे भी बड़ा फोकस पोर्शन दे दो भैया। A जितने wise पैसे decision. कमाते हो उससे ज्यादा तो Thank तुम you. लोग उड़वा देते हो कमीनों। एक मिनट रुकना। I hope to see you again. Farewell for ग्रीन now. स्ट्राइप्ड बेटर है ना उससे, तो ये वाला सेल करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होता है मैं सेल आउट कर देती हूँ। बाकी सब हाँ ठीक है, सेल कर सकते हैं। हेलो सैनकास्टिक। What can I do for you today?
नीचे ये वाला गंदा सा। ये भी कभी ना कभी तो चाहिए ही होंगे, बट अभी पैसे बचा लेते, बाद में ले लेंगे। I hope to see you again. Farewell for now. यार इसमें रात से दिन कैसे करते थे मुझे याद नहीं आ रहा है। या तो कुछ था कि उसी किसी पे दोबारा क्लिक करना पड़ता था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बट अभी कोई क्लास अटेंड नहीं करनी तो उतनी कोई टेंशन नहीं है। अरे मेरा स्टैंड कहाँ गया? वैसे ये वाला है। डकबॉग टंग, जाके ये भी लाना पड़ेगा भाई। डकबॉग टंग ये कहाँ से मिले? उधर ही से मिलेगा। हॉगवर्ट्स वाले इतना खर्चा कराते हैं बच्चों का, शर्म नहीं आती इनको? मतलब एक तरफ बोलो भी तुम्ही कि खुद से सीख के आओ और फिर उसके बाद तुम लोग पैसे भी ना तो हैं। ठीक है भाई। We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Duckbog. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. अब अगर मुझे दोबारा वहां जाना पड़ा ना, उस पेरी पिप जो भी है, पिपिंस पी नाम है, बन रहा है। और भैया क्या? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. तुम्हारा भरोसा नहीं बना, अभी तक नहीं बना। तुम क्या देख रहे हो नीचे? 1 रुपए वहाँ 1 रुपए पड़े हुए थे। Maxima and Duress potion, use them simultaneously. अभी तो वहां गई थी, ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा? एक्वायर मैक्सिमा एंड एड्योरेंस पोशन। एफ हो गया। अब उनका भी सामान खरीद के लाना पड़ेगा और उनके लिए चाहिए अब 2 राउंड मारने पड़ेंगे क्योंकि उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी देखना पड़ेगा। जी जी, अभी तो वहां पे टाइम वेस्ट करा के आई थी यार। हम पता है ये 5वीं बार अभी ये वाला पोर्टल यूज कर रहे हैं। किलर ब्रो, थैंक यू दिलीप ब्रो। कल अपना कलर चेंज हो जाएगा। Thank you again for delivering those potions to Madam Lawing. अरे चुप करो यार, Saved me a lot of time and trouble. कौन से चाहिए थे? मैक्सिमा पोशन चाहिए था। A wise decision. Thank you. एक मिनट, एड्यूरस पोशन की तो रेसिपी नहीं है, खरीदना पड़ेगा वो। 1 सेकंड में पोशन डायरेक्टली खरीद सकती थी? हाँ पीऊंगी। ठीक है। A wise decision. Thank you.
खरीद I सकती hope to थी see you टायर। again. Farewell for now. नहीं खेलना ये गेम। नहीं बनना हॉगवर्ट्स का स्टूडेंट मुझे। इतना काम कराते हैं मुझे हैरी पॉटर बना दो ना डायरेक्ट, बस अपना काम करते जाओ, मारते जाओ, लड़ते जाओ। ये आजू बाजू के इतने काम करा रहे हैं यार, बुरा लगता है ये। जब भी मैं जितनी बार भी मैं ये देखती हूँ ना मुझे बुरा लगता है देख के। ये मूवी में नहीं दिखाते पता है, ये जो एल्फ होते हैं ना ये पूरा का मतलब साफ सफाई खाना वाना सब करते हैं। और ये मैं कल से नहीं, जब से मैंने हॉगवर्ट्स खेलना शुरू करा मैं ये 10वीं या 8वीं बार बोल रही हूँ, बट मुझे सच में बुरा लगता है देख के। ये तो हमने खरीद लिया था एड्यूरस पोशन, ये हम बना लेंगे चलो। बच गए। 6 मंथ बताओ, 6 महीने हो गए। 2K कब होंगे? 2K जब ये चैनल को 2 साल होंगे शायद से, तब 2K होंगे। एक साल में 1K। कौन कौन से पीने थे? ये मेरे पास ऑलरेडी था क्या? ये मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने फालतू में खरीद लिया क्योंकि मैं चूतिया हूँ। Excellent. बट ये इतना इसने पिया क्यों? इतनी अजीबोगरीब सी चीजें। तुम अभी कर क्या रहे हो? कहाँ पे तुम? मतलब क्या कैब में बैठे हो? लव पोशन है ये, पक्का लव पोशन है। ऐसी बॉटल है उसके हाथ में। How are your assignments coming along? जल्दी आ जाओ थोड़ा, हम तो यहाँ तक आ गए, आप ही नहीं आ पा रहे सर। तुम पे काम कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है तो मतलब रात के तुम 8-9 बजे से पहले तुम घर नहीं घुसने वाले। अरे सॉरी सर, गमला तोड़ दिया आपका। I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Ah! You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Yay! Alohomora. ये कौन सा एरिया है? ओई वाह, जगह कौन सी है? Rebellion. Alohomora.
dreading is surprisingly somber, considering. तो ये खोलते हैं फिर। मकड़ी मकड़ी मतलब 8 8 12 20 मतलब चाहिए पहले वाले के लिए 2 चाहिए, यानी कि ये जो भी ये हाथी है ये। यूनिकॉर्न 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 पहला है एक और ऑक्टोपस है 7 1 7 8 मतलब एक और एक चाहिए, यानी यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। Revelio. Finite. अरे ओ दीदी नीचे गिर गई। Revelio. ये क्या है? रुको इसको तो मैं करके रहूंगी। Finite. ये है क्या? पता नहीं है, छोड़ो। Quidditch equipment shelf बढ़िया है, अच्छी लूट थी, मजा आया। I adore the hamlets near the coast. They're a bit down. ये दोनों बराबर ही हैं। ओहो नहीं, गंदी लग रही हूँ। ये अपग्रेडेबल है। Green wheel heals you, greater effect. Collections. The speak to Sirona and the 3 broomsticks. 3 broomsticks जाना है। ये है शायद से कि यहाँ पे है। कहाँ है? ये बहुत बड़ा गेम है भाई, इसको तो जब तुम दिन में 6 घंटे रोज खेलो तब जाके Here I come. कुछ इनका हल होगा। Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is.
If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Okay. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. अब तो मैं यहाँ पे भी ताले तोड़ सकती हूँ, बट जो मेरे लेवल के होंगे वही वाले से। ये तो बड़े-बड़े ताले हैं, यहाँ के नहीं तोड़ पाएंगे लग रहा है। Dad. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Such vestments do little for one. Welcome to the Hog's Head. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did, did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus. In a tomb ये वही accessible witch only होगी, by वो wizard लड़की kind. जिसने Ranrock ancient and I magic had सीखा था। a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need. नहीं ये वो वाला relic नहीं होगा, वो उस औरत का relic नहीं होगा। अगर इतने easily obtain उसको कर सकते तो मतलब ये उसका नहीं है। Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those तुम्हारा और differences कृष्ण का always to be साथ insurmountable. में होना चाहिए It क्योंकि is the तुम reason दोनों I start find से हो। myself traveling with you to this Killer tomb bro, today. Dilip, you stay here. एक दिन बाद लिया था तो इसकी मतलब तुमसे लेट होगी ये भाई ये जो पोशंस के लिए इतने चीजें ये काम आती ना सोनिक का मेरे साथ होगा हाँ सोनिक की भी कंटिन्यू चलती आ रही है अरे यार अच्छा ये कहीं और लेके जा रहा है ठीक है यार भागो 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 भाई एक तो छोटा है भाग भी रहा तो पता नहीं चल रहा भागो 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 भागो
Ah, and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? नहीं. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. क्या I will आंखें remain थोड़ी here, अजीब सी नहीं eagerly है? awaiting your return. Please, डर. be... ओही. Revelio. It's sealed. Moths. Curious. ओ उसको लाना पड़ेगा. मैं इसको लूँ कैसे? उसका यहाँ पे काम है इतना तो मुझे पता है. मैं उसको अपने पास कैसे लाऊं? मेरा कोई स्पेल काम नहीं, या तो डिपल से हो. इसको अपने पास कैसे लाऊं? Lumos. Merlin's beard. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Confringo! Lumos. Conjuring नहीं. यूनास को शायद से. मैं यूनास को यूज नहीं कर पा रही. मतलब ये नहीं है. Perhaps a spell would help open this door. अल्लाह हम औरत इस पे कर नहीं सकते जो इस स्पेल. Confringo!
I might need something that can push a bit harder to open this up. और कौन से स्पेल है मेरे पास? खुल गया। एक मिनट रुको जरा। Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Good feeling. You have a good feeling. Must be struck with fire spells to make them vulnerable to other attacks. Visit the collection menu to learn about the enemy weakness. Oh, they're certainly persistent. Oh. Confringo. Okay. Ayo! बाप रे, उल्टी खोपड़ी। Lumos. Revelio. कहाँ कहाँ जाना है? एक तो यार ऊपर यार एक खजाना जो है ये देखने में अच्छा लग रहा काफी। Lumos. Sonic. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Rotated? I don't think Missy it can be rotated. एक सेकेंड। नहीं 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 रोटेट तो नहीं होगा। रोटेट और कैसे हो सकता है ये? रोशनी आ रही है। ओह ल्यूमस से हो सकता है ना? Lumos. This has a moth imprinted on it. The same as the door. आ जाओ तुम इधर आओ। घूम रहे हैं यहाँ पे। Lumos. Revelio. लूट तो थी नहीं यहाँ पे कोई। Let's go. What's that hanging there?
Looks precarious. Revelio. Revelio. Down I go. No other way. So you're telling me I have to go down there? ठीक है भाई. मेरे को अलग-अलग चीजें मिली है ना. Revelio. पता नहीं कहीं मेरी गुफा में कहीं. अरे हेडबट दे रही है भाई. अरे और आ रही है तुम्हारी मम्मी की साकी नाकी. तेरी तो बाप रे कितने थे बे. खजाना चाहिए मुझे. मैं बता रही हूँ इतना इतना जो हार्ड वर्क कराया है ना तुम लोगों ने. ऊपर तो चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा.
सिर्फ एक ही तरीका है तितली लगा के। Lumos. अरे जल्दी ठीक है भाई, ठीक है। This looks even more complex. इतने से काम नहीं बन रहा, ऊपर तक नहीं जा रहा ये। Lumos. दूसरी तरफ मे बी। Revelio. कहाँ गया? Lumos. Lumos. ये तो ट्रिकी है। वो चिड़िया चिड़िया बोल रही हूँ, वो तितली वापस चली गई। Lumos. या तो Lumos. नहीं रुक रही, मेरे पास नहीं रुक रही, वो इंस्टेंट वापस चली जा रही है। अच्छा एक सेकेंड, दिख गया मुझे। Lumos. इधर आओ। Confringo. Lumos. Too many big brain moments. The witch's final resting place. Logok said the helmet was in her sarcophagus. अभी यहाँ पे और उसके चेले नहीं आ रहे, ये कैसे हो? ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ गए उसके चेले? The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door.
Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. एक अकेली लड़की को लड़ने भेज रहा है बुड्ढे, अगर तू साथ चलेगा कुछ तो कर पाएगा एटलीस्ट. ठीक है भाई, भेज दो अकेले. I'll head there now. Good. हम तो हैरी पॉटर There's की no छठी time to औलाद है ना. lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. अरे यार. Lumos. हाँ तुम लूमिस कर लो. ठीक है ठीक है ठीक है. जाना कहाँ है? काफी दूर से नहीं लेके जा रहे हैं लोग. Who lived here, I wonder? So difficult? पीछे वो आ गई, वो और आ गई चुड़ैल, है ना है ना. हाँ मैं कसम से इन लोगों को ना छोड़ूंगी नहीं भाई. डरा देते हैं बात बात पे. एक सेकंड, यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है? कैन एनीबडी टेल मी द एग्जिट प्लीज? मैं आ तो गई हूँ, आई डोंट नो हाउ टू. एक मिनट. Repairer. मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? मैं आ तो गई हूँ. Is there any way to get out? अरे यार, ब्रूम 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 अलाउड नहीं है यहाँ पे. इसको अरे ये नहीं चाहिए यार.
मैं नहीं जा रही दोबारा ऐसी जगहों पे। मुझे लगा वो मेमोरी है तो ले लेते हैं, बट दैट वाज नॉट राइट। इन लोग को फोरबिडन फॉरेस्ट, ये बल्ली दो के बाद ये कहाँ से कौन सा टाइम की स्ट्रीम स्टोरी मिस करवा दी मेरी। अरे ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, मैंने कुछ खास नहीं किया। अभी सुनो, जो मेन स्टोरी का प्लॉट है वो उतना अभी तक यही हुआ है कि इसने जाके सिरोना से बात करी। उसने बोला था ना प्रोफेसर फिंग ने कि गॉब्लिन से कांटेक्ट करो, वो शायद से इन्फो निकाल सके। तो ये बस उसके अलावा मैंने सिर्फ झाड़ू उड़ाई है, झाड़ू उड़ा के पंगे, झाड़ू उड़ाई थी मतलब गुब्बारे उबारे फोड़ने के लिए, और क्या कहते हैं स्पेल सीखा था और यही सब करा था। इसके अलावा इतना कुछ खास नहीं करा मैंने। मेन स्टोरी में यही है कि मैं सिरोना के पास गई थी, सिरोना ने मेरे को वो लॉग लॉग क्या नाम था इसका, जो भी नाम था याद नहीं आ रहा, दूसरा जो उसका गॉब्लिन छोटू दोस्त था उसके पास भेजा, और वो गॉब्लिन ने इसको यहाँ पे अब भेज रही है बंदों के पास। एक हेलमेट चाहिए उस गॉब्लिन को। उसने बोला वो सिरोना, वो 3 ब्रूमस्टिक की मालिक जो लड़की की जैसी शक्ल है, लड़के जैसी आवाज है, वो याद आई। तो ये गॉब्लिन ने इसको यहाँ पे भेज दिया है। इसको उसको गॉब्लिन को एक हेलमेट चाहिए। उसने बोला कि वो हेलमेट ला के दो, मैं तब तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी हम लोग वो हेलमेट लेने जा रहे हैं। मेन स्टोरी लाइन यही चल रहा है, बाकी सब बगल आजू बाजू का था कि स्पेल सीख रहे हैं, पोशन सीख रहे हैं, यही सब था और कुछ नहीं था। The Ashwinders. Who goes there? No! हेलो। अयो ये नहीं, ये कहाँ से आया? ये नहीं, ये तो हमने बुलाया ही नहीं, इसको तो हमने बुलाया ही नहीं था, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? हेलो? Thought you could hide from me, did you? Now to finish the job. Might want to look up. The lamb returns to the wolf. Expulso! Can't put your fire. Just how many witches have you finished off? What are your thoughts on Bolso? Gymnastics won't save you. Expulso! 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 ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। आप गॉब्लिन का काम कर रहे हैं? यस। ये वाला ऐसे नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने वो भी वेस्ट कर लिया, विगन व्हील पोर्शन। भाई पे लो, भुर्जी बना दी उन्होंने मेरी। You've made a grave mistake. Rookwoods don't go down. You will pay for your deeds. You're going to regret that. That's it. This is for Rookwood! It seems we may have an Expulso! 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 Expulso!
बाय बाय। कल आना कल। इवन तो मैंने किसी से लड़ाई नहीं करी और उसके पहले जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। चुप। ये पर्पल औरत, ये पर्पल पर्पल कुछ तो है, मुझे पता नहीं है क्या है बट कुछ तो है। This place has seen better days. I hope you have your affairs in order. अब कर लिया सेट अलग अलग मैजिक अलग अलग लेआउट में। हाँ कर लिया। वो एबिलिटी अनलॉक करनी पड़ती है। तो मैंने अब बेसिकली सारे जो इस टाइप के होते हैं ल्यूमस और मतलब डिसइल्यूजमेंट स्पेल और ये सब एक तरफ कर दें, कॉन्फ़िगरेशन वाले एक तरफ कर दूंगी। और अभी एक और सेट अनलॉक करके ये जो क्या कहते हैं जानवरों का नहीं होता फीड और ये सब वो वाले एक तरफ कर दूंगी। ले आए तुम्हारा हेलमेट। अब इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना ढंग की तो बहुत पिट हो जाओगे तुम। ओ हाँ बाय द वे अभी हम लोग यहाँ पे ये जो टूम दिख रहा है ना अंदर इस टूम में भी गए थे बट यहाँ पे हेलमेट मिला नहीं था क्योंकि उसके बंदे पहले ले गए थे। Even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It is Stunning, Logok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Oh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. तुमने क्या भेजा था? His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that I... Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Confringo. Leviosa. In यहाँ पे Revelio. क्या हो सकता है जो मैं मिस कर रही हूँ? एक सेकेंड। Lumos. आये जीनियस तो मैं हूँ। आई नो बोलने की जरूरत नहीं। आई नो आई एम अ जीनियस। बटरफ्लाई हाँ पकड़ ली। Not so tricky after all, Merlin. ये मेरा दूसरा ट्रायल था। इससे पहले मैं एक और कर चुकी हूँ। मतलब वो एक तो मेरा डायरेक्ट उस लड़की ने करवाया था, वो वाला मैं कर चुकी थी ऑलरेडी। बट इसका कोई वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसका कोई रिवॉर्ड मिलता ही नहीं है।
बस करने के लिए कर लो। ठीक है भाई, हम तो तूतिया हैं। मैंने बिना चैट बाद में पढ़ी है मैंने वाली। ये क्या है? The elf Deek wants to teach me to how to use the nab stick to rescue magical beast. अच्छा। Check in with Deek, तो ये तो वहाँ होगा ना, सीक्रेट रूम में। यहाँ क्यों होगा? चल के देख लेते हमें क्या। Either you cannot mount in location or you are already mounted. Remove requirement पे होना चाहिए Deek. Deek? ये रहा। Ah, Backpack? Deek is so happy to see you. Deek noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deek has seen one of these before. Deek calls it a knapsack. अरे कितना अच्छा है यार। बट ये है क्या? Perfect for gathering and transporting beasts. तुमने ये ठीक नहीं करा तो उसकी स्ट्रीम बर्बाद कर दी, माफ नहीं I करना। have been thinking about something Professor अरे Howland मुझे said in जल्दी शुरू Beast's करना class, था क्योंकि that आज I मैं should सोच रही study थी as कम many से कम beasts as I एटलीस्ट 6 can या 8 on my own घंटे ये time. गेम खेलूं, तब She जाके also इसमें कुछ mentioned that प्रोग्रेस होगी poachers have been ढंग की। active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deek was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deek can show you how to best use पता the है ये knapsack डीक कौन सी and वाइब दे रहा है? where. जैसे हैरी पॉटर के पास डॉबी था ना, ऐसे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे हमारे पास ये डीक है। Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deek when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the तभी knapsack. तभी लंबी स्ट्रीम के Perfect. लिए ही पहले Deek शुरू किया loves था। an outing. अरे उतना खास नहीं हुआ कुछ, निक मैं बता रही हूँ ना, मैंने वो जो साइड क्वेस्ट थे ना, साइड क्वेस्ट करने पड़ रहे थे मेन क्वेस्ट A के लिए। nasty जैसे मुझे poacher. Deek hated एक स्पेल सीखना था डिपल्सो प्रोफेसर शार्प से, तो उसके लिए मुझे पोशंस एंड ऑल बनाने पड़ रहे थे। पोशंस ऑल बनाने इन द सेंस कि उसने बनाना ऐसे ऐसे जैसे सिखा रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं सिखाया था, सिर्फ मैंने जाके बस वो पिपिन के शॉप से इंग्रेडिएंट्स खरीदे और जाके बना लिए, ऐसा किया था। मैं कर तुम पर यकीन नहीं आया, जाके तुम बैक करके देख लो। और हम लोग ने झाड़ू उड़ाई थी, झाड़ू उड़ाई थी इन द सेंस कि वो जहां से हमने अपनी झाड़ू ली थी उसने एक साइड क्वेस्ट नहीं दिया था कि एक लड़की से जाके बात करो, तो एक स्लिदरिन की लड़की मिली थी इमेल्डा करके। वो बहुत ही लाइक घमंडी टाइप्स थी कि मैं बहुत अच्छी वो ब्रूम मतलब ब्रूम उड़ाती, और तुमने जो उस दिन क्विडिच पिच पे करा, तुम ना लैब 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 जल रही थी अपने से, तो उसका रिकॉर्ड हमने बीट कर दिया था क्योंकि उसने हम लोग से एक रेस कराई थी और हम लोग ने उसको हरा दिया था बस। for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deek बट वो first सब saw a साइड क्वेस्ट थे, knapsack. वो मेन स्टोरी के प्लॉट नहीं थे। It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deek enjoys क्विडिच coming तो here नहीं to खेल watch लिया, the नहीं beast. क्विडिच नहीं खेला, especially the नहीं pottle खेला, of puff वो skins रेस करी nearby. थी, झाड़ू पे रेस It'll be करी थी nice बस। to रेस keep इन द them सेंस safe. कि All you मेरे will need to do दो is लोगों get की रेस नहीं close, थी, बस direct मुझे the open हुप से knapsack निकल toward the के puff टाइमर skin, बीट and करना था। in it'll go. All right. इसने क्या बोला मैं सुन ही नहीं पाई। अच्छा, रेस्क्यू ऑफ पफ स्किन, टैप टी एंड देन होवर ओवर एन knapsack एंड होल्ड एंड क्या। हाँ रुको, ये वाला पूरा मैजिकल बीस्ट का बनाना पड़ेगा। अरे ए कनफ्रिंगो की चाची, Do cooperate, won't you?
I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. हाँ, लीड Poachers कर दिया. capture उस puffskeins लड़की का and, मुंह तुसा हो well, गया था Deek जो हम लोग isn't को बोल sure रही थी. what वो they do एक्चुअली with them. स्लिदरिन की थी तो तुम उसका Deek is एटीट्यूड certain समझ they will लो. be safer with you. Now, not all beasts will be as Oh, simple हाँ. to rescue as a एक और puffskein. चीज. Deek suggests हम you लोग next find a beast एक that मिनट can इसकी बकवास fly. जान फिर बताते A हैं. jobberknoll, perhaps. All right, where would I find one? Deek knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deek has seen poachers in the area recently. Deek will meet you there whenever you're ready. हाँ, हम लोग वो वाली क्लास में गए थे, क्या कहते हैं, एनिमल्स वाली. वहाँ पे इसको एक लड़की मिली, लड़की का नाम नहीं याद आ रहा. पॉपी, हाँ पॉपी था शायद से नाम उसका. वो हफल पफ की थी और उसने इसको ये सिखाया बेसिकली कि जानवर की केयर कैसे करनी है. और हम लोग ने एक हिप्पोग्रिफ देखा था. नाउ आई एम रियलाइजिंग कि 2 घंटे में काफी कुछ हो गया. आई एम सॉरी निक. अगर तुम्हें हिप्पोग्रिफ वाला देखना है, मैं 1 मिनट खड़ी हो जाती हूँ यहीं पे, तुम जाके देख के आ जाओ. बस हिप्पोग्रिफ आया था, हम लोग ने उसके वो सहलाया था और फिर वो उड़ के चला गया था. राइड नहीं करी थी उसकी हम लोगों ने. मारेगा मुझे. तुमको मेरे को मारने का मन कर रहा है ना. आई नो. तो अरे याद नहीं था, सच्ची में याद नहीं था. देखो मैंने एटलीस्ट बता दिया ना, बट हम लोग ने क्या क्या किया, मैं याद आता कि मैं बताती गई. Hello, Deek. Shall we continue? Oh, good. Deek was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The तुम बैक jobberknolls करके are अगर just तुम्हें वो here हिप्पोग्रिफ in वाला this large सीन देखना, तुम tree. देख के आ If it's सकते हो. helpful, Deek has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. जब एनिमल वाली क्लास चल रही थी तब हुआ था. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deek will be waiting. देखो कैसे टाइम नहीं पता ना. ट्राई करता कर लो. तब तक मैं इस जानवर को पकड़ लूं या फिर मैं खड़ी रहूं ज्यादा बेटर है. ये बताते जाओ ताकि फिर हम पकड़े ना पकड़े इसको. दो मिनट रुको. ओके. और कैसे हो? तब तक आसपास घूम के आ जाते हैं. थोड़ी लूट पार्टी कर लेंगे. ये क्या चीज है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा. और तब तक हम इन लोगों से लड़ लेते हैं. तब तक मैं इन लोगों से लड़ ले रही ज्यादा बेटर है. ये ले. Well, you look potato! Incendio! How does that feel? Confringo! I see that. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I'd like your help with something. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? अभी आया. हाँ, तब तक मैं बस इनसे लड़ रही हूँ. And she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Rockborough's famous for someone having a pet troll and not much else. No, dance, they want to buy off. You will. Potato!
that you've attended the Beasts class, I've asked Deek to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. अरे इतनी जल्दी सब मर गए। मुझे लगा ये क्या, योर गियर स्लॉट्स आर फुल। अरे गियर स्लॉट्स आर फुल तो मैं पैसे क्यों नहीं ले सकती? पैसे तो लेने दो यार, पैसे भी नहीं लेने दे रहे। I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? आ गया। अरे ये पैसे नहीं उठाने दे रहे यार। Your gears will complete Merlin trial challenge to increase your gear slot. अच्छा तो रुको अभी करके आता है। एक मिनट पास में मर्लिन का ट्रायल था, रुको gear slot इंक्रीज हो जाएगा। पैसा तो मुझे चाहिए। I want my money. I know a Merlin trial when I see one. चलो लेट्स गो। वो भाग गया, नहीं तो पक्का तुम राइड करती। अरे Rebellion. These Merlin trials won't get the best of me. हो गया मर्लिन ट्रायल कंप्लीट। अब मेरा स्लॉट भर गया होगा। पैसा दो, मेरा पैसा दे, पैसा दे। अभी भी नहीं, झूठे हैं भाई। बोला इन लोगों ने मर्लिन ट्रायल कंप्लीट करो तुम्हारा गियर स्लॉट इंक्रीज होगा। झूठ बोलते हैं हरामी। चूतिया काट रहे हैं, बेला का चूतिया काट रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अरे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरे को पहले इन पे ये डालना है और फिर हमें अपना बैग खोलना है। आजा आजा आजा, पकड़ लिया। I'll look after you. भाई ये तो फैंटास्टिक बीस्ट वाली बनती जा रही है। बैग के अंदर जानवरी जानवर। I rescued a jobberknoll. Deek hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of Moon trees calves मैंने up नाम this सुना है, मेरे को footpath. याद नहीं आ Deek will रहा see you there. है। Let's go. Rebellion. आई थिंक वहां पे ना कोई गेयर होगा। ये फैंटास्टिक बीज वही बोल रही थी मैं। वहां पे ना अंदर जमीन में कोई गेयर होगा, तभी मेरे को लूट करने नहीं दे रहे थे। हेलो डीक भैया, कैसे हो? Handy resource indeed, your field guide. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front. तो मतलब रात करनी Only पड़ेगी। under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to कुछ भी हो hasten सकता है। time, वो फैंटास्टिक बीस्ट you भी तो might पुराने sometimes टाइम have की है, to बट wait वो until डम्बलडोर nightfall के to यूथ see की है। them. ये उससे भी पहले की है। I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. You can advance by accessing the map and pressing F. हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी रात कैसे करते हैं।
Ui. Hey yo, you want to come with To me? be difficult, I mean you no harm. आजो 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 नहीं, don't go away from me, don't go away bro, no. अरे सबके सब चले गए, कोई तो रुक जाता. Oh little guy, okay little. अब तो हम तुम्हें दौड़ाएंगे. कैसे ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम सबके सब, शर्म नहीं आ रही? ओए अच्छा मैं डर गई. आ गए. हम पहले प्यार से बात कर रहे थे नहीं? I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. तो अपने रूम Deke पे will ला meet you सकता back है. in the room whenever you're वो वहाँ ready. पे उड़ेंगे. Return to the room of requirement. एक मिनट अभी चलते हैं, एक सेकंड. हेलो. अरे आप झाड़ू लगा रहे हो? झाड़ू छोड़िए यार, There आप you are. झाड़ू वाड़ू मत लगाया करिए, We अच्छे need नहीं to show लगते the आप. beast you rescued, then you home. But, not enough room to let them out अब ये here. और एक्सपेंड होगा. ओ I बाय can द वे hold those हमारा beasts रूम का running साइज amok. बढ़ता जा रहा है That धीरे wouldn't धीरे do at करके. all. तो अभी आई थिंक और बड़ा होने जा रहा है Perhaps हमारा if you रूम. focus on what your beasts need, the room will provide. सोचो 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 सोचो. What exactly did you think of? ये क्या है? अरे 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 अरे. अबे You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. मेरे को तो पड़ता है. Meet you inside when you're ready. अरे ले अपने अपने रूम के अंदर छोटा सा गार्डन खोल लिया, ये भी ठीक है. ओहो पूरा फील्ड बना दिया रूम के अंदर. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. ये छोटा है. your beast अरे will be वो quite उतने से के comfortable अंदर here. फैंटास्टिक They'll बीस्ट live वाली वाइब आ रही है. healthy, कहाँ है safe lives. जोनाथन? जोनाथन बोला था ना उसको Perhaps you want फैंटास्टिक to बीस्ट में release them. इंटरेस्ट है. Let them see the new home. Oh! तुम्हारा बड़ा फिर पता नहीं कितना बड़ा होगा. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. इसको कौन से मैजिकल मटेरियल्स चाहिए थे? कलेक्ट. ओके वो तो इससे होता है ना. हेलो. Wonderful. ये देखो ये करा था मैंने वहाँ पे वो वाली क्लास में.
ए यो, ये कर रही थी मैं मैजिकल क्रिएचर्स वाली क्लास में। इनको खिलाना और इनका बाल वाल पूरे ब्रश करके रखना। मेरा तीसरा क्रिएचर कहाँ है? वो रहा। हेलो छोटू। थंबनेल अच्छा है, किसने बनाया? एलन, माय न्यू एडिटर, थंबनेल एडिटर। इट्स रियली गुड एक्चुअली, and like he is very punctual as well. मतलब if you tell him to do your work on time, he does that on time. मेरे पुराने जो जितने भी एडिटर्स ऑनेस्टली बताऊं, कोई भी उनमें से सही नहीं था। मतलब उनकी एडिटिंग तो ठीक थी, बट किसी में भी पंक्चुअलिटी नहीं Now थी। Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Is this game worth its price? Exactly. It will allow you to एक use मिनट, your ये magical बोल दे तो फिर मैं materials एक्सप्लेन to करती। weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. बेसिकली ये गेम वर्थ इट तो कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, जिसने भी हैरी पॉटर खेला है या फिर इवन जिसने बुक्स पढ़ी है, तो मतलब इस गेम के अंदर वो सारी चीजें हैं। क्योंकि हैरी पॉटर की मूवी में जो था, जो तुमने हॉगवर्ट्स के बारे में देख, देखो ये हैरी पॉटर तो है नहीं, गेम का नाम भी हॉगवर्ट्स लेगेसी है। हॉगवर्ट्स में जितनी भी चीजें तुमने मूवी में देखी थी और जिसने बुक पढ़ी हुई है, बुक में एक्स्ट्रा नॉलेज थी, वो सारी चीजें इसमें इन लोग ने इंक्लूड करी हैं। तो मतलब दोज हु हैव सीन हैरी पॉटर, उनको ये गेम खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यू न्यू चीजें उनको हैरी पॉटर के बारे में देखने को मिलेगी। आई मीन हर कोई बुक्स नहीं पढ़ता, तो जिसने ये बुक्स नहीं पढ़ी है उसको भी खेलना चाहिए वाला, क्योंकि उससे उन लोग को न्यू न्यू चीजें देखने को मिलेंगी। हैरी पॉटर फैंस के लिए बढ़िया है। इंचेंटेड लूं? अच्छा यार मेरे पास स्लॉट नहीं बचे हैं कॉन्ज्यूरिंग के लिए। एक सेकंड। हॉगवर्ट्स के बारे में जानने के लिए बेस्ट है, हाँ। मतलब गेम के नेम के ऊपर जाओ, जो हॉगवर्ट्स लेगेसी नाम रखा है ना इन लोगों ने, इट्स टू द पॉइंट। बेसिकली हॉगवर्ट्स में जितनी भी चीजें हैं, सारी क्लासेस, सारे लाइक ब्रूम एंड पोशंस एंड हर्बोलॉजी सब है इसमें। टाटा स्मर्फ सीरीज वालों विद एन आयरन टू विद एन आयरन स्मर्फ, बट स्मर्फिंग मैंने छोड़ दी। मेरे को स्मर्फिंग करने के लिए बोलते हैं अभी भी सब्सक्राइबर्स, बट मैं करती नहीं, क्योंकि मैं नए नए गेम ज्यादा ट्राई करने लगी ना बीच में, तो मैंने एकदम स्मर्फिंग एंड ऑल छोड़ दी थी। नहीं सारे ये बुक कर लिए ना। ये तो हाँ, तो मेरे अलग अलग लोग है मेरी स्ट्रीम पे। मैं इतने अलग अलग गेम ट्राई करती हूँ, तो डिफरेंट बेसिक कास्ट इम्पैक्ट्स रिड्यूस स्पेल कूलडाउन्स। फनी वे में ट्राई कर सकते हो विद फन एंड ट्रोलिंग पार्ट, जो देखने में एंटरटेनिंग हो। फन एंड ट्रोलिंग इन द सेंस, देखो अगर टीम वालों से मैं ट्रोलिंग करूंगी तो फिर, और अगर बाद में मैंने कहीं गंदा खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अभी बीच में बिल्कुल ही वैल्यू मतलब एकदम छोड़ ही रखा है, काइंड ऑफ कह सकते हो, ज्यादा नहीं खेलती मैं। अगर मैंने बुरा खेला तो फिर मेरे को टीम वाले गाली देंगे और फिर मेरा पंगा हो जाता है।
चैलेंजेस तो रहते ही हैं हर चीज में। कर सकते हैं ट्राई, बट आई डोंट थिंक अभी करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी बीच में इतने सारे गेम्स ट्राई आउट कर रही हूँ कि लगता नहीं टाइम मिलेगा। अभी मैं असैसिन्स क्रीड ही खेल रही थी, मुझे उसको बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि हैरी पॉटर आ गया, और हैरी पॉटर अभी न्यू रिलीज्ड है तो उसको तो खेलना बनता ही है। Quidditch equipment shop, Quidditch equipment. New bees can receive bees dens are unlocked in quest. New trade recipes can be collected in bandit camps. किसी में भी ट्रेड्स नहीं है ना? अच्छा ठीक है तो आई बैड। That came out nicely. I should show Deke. You can try Sheriff to Gold series or higher. कर सकते हैं ट्राई, बट उसके लिए पहले मुझे ये स्टोरी गेम्स खत्म करने पड़ेंगे क्योंकि अभी मेरा एक मिनट इनकी बात हो जाए। You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. बेसिकली अभी मेरा शेड्यूल ये है कि मैं दिन में स्टोरी मोड गेम्स खेलती हूँ, रात को फिर आरपी करती हूँ लोगों पे। टीके आरपी भी कर रही हूँ ना मैं, तो आरपी करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल। तो अभी मुझे ये पहले स्टोरी मोड गेम्स क्लियर आउट करने पड़ेंगे वो वाली सीरीज शुरू करने के लिए, क्योंकि इनको भी बीच में नहीं छोड़ सकती। कहाँ पे है ये लड़का? और दूर नहीं जा पा रहा था? यहाँ तक तो चलो मैं आई हुई हूँ, कीन ब्रिज। ये रूम को फिर से जाने लगी। रूम कहाँ से जा रही थी? वो तो मुझे मिली थी एक चीज, तो मैंने हैंग कर दी वॉल पे। It's like a place right out of a storybook. यहाँ पे मर्लिन है ना, ये भी कर लेते हैं। मेरे पास कितनी पत्तियां हैं मैंने नोटिस नहीं किया अभी तक। आई थिंक मेरी लीव्स खत्म होने वाली होंगी। ये समझ नहीं आया, ये क्या है? ये कैसा ट्रायल है जिसमें दिख ही नहीं रहा? कैसा ट्रायल है? बट तुमने व्यूअरशिप मिलती है स्टोरी गेम्स पे? स्टोरी मोड गेम्स पे व्यूअरशिप नॉर्मल है बेसिकली, जो उस गेम को देखना चाहते हैं वो लोग ही देखते हैं। बट प्रॉब्लम विद वैलोरेंट इज कि वैलोरेंट की भी ऑडियंस को उस पे भी कुछ खास व्यूअरशिप थी नहीं मेरी। Nice to see you again. अगर मैं वैलोरेंट खेलती, जैसे बीच बीच में कभी कभी टीके आरपी के बदले में वैलोरेंट खेल रही हूँ बीच बीच में, बट उसकी भी कोई इतनी खास व्यूअरशिप है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा अपने गेम्स को एक्सपैंड करना शुरू करा।
This will do just fine. Thank you. ऑल गुड, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए नए गेम शुरू करे मैंने। Thank you for stopping in. I और हॉगवर्ट्स appreciate it. लेगेसी तो खैर खेलना ही खेलना था, बिकॉज ये वाला गेम इज लाइक कि मतलब आई एम अ बिग पॉटर हेड बेसिकली, तो ये वाला गेम तो मुझे खेलना ही खेलना था। ये मर्लिन का ट्रायल ये वाला समझ नहीं आया, कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। Not sure how I'd fare in a little place like this. मेरी लाइट गई। What are you up to now? अगर बहुत देर तक नहीं आई तो लोचा हो सकता है, क्योंकि सुबह भी गई हुई थी। Confringo! इधर कुछ तो है जो कि मेरी समझ से ऊपर है। नहीं, यहाँ तो नहीं आना। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं आ रहा, हम नहीं आ रहे, जा रहे हम, बाय बाय। यहाँ पे कुछ तो है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं कर सकती ये वाला। आई डोंट थिंक अभी ये इसके लिए इक्विप्ड हूँ मैं। ये क्या है? नीचे हो जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा रास्ता। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा शायद। ग्रीन वाले को पकड़ो। नहीं, अभी पकड़ नहीं रही मैं, अभी वहाँ रास्ता ढूंढ रही हूँ, वहाँ का जहाँ जाना है मुझे। आई थिंक मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा रोड, बिना फॉलो करे मैं नहीं जा पाऊंगी। यहाँ से चलते रहना है अभी आगे। कलेक्शन के लिए अभी नहीं ले रही, अभी नहीं ले रही, बाद में ले लूंगी।
This could prove dangerous if I'm not careful. यहाँ पे कहीं पे वो नहीं है ग्रीन वाला, वो फ्लू पाउडर वाली जगह? ये रही। लाइट आई नहीं आई नहीं आई। You can't imagine how inconvenient travel ये was ठीक है। before I invented powder. फिर जॉनी को दिखाएंगे क्या क्या पकड़ा हमने। पकड़ने के लिए तो ऐसे एक पास में यहाँ पे भी है, ये देखो ना। चलो रुको पकड़ ही लेते हैं, इतना कह रहे हो तो। ये बट हमारे पास ये ऑलरेडी है नहीं, ये पकड़ा हुआ है ना मैंने। ये तो ऊपर ये नहीं, ये तो जॉबरनॉल ये पकड़ा हुआ है मैंने, ये तो पकड़ा हुआ है। यहाँ पे फायदा नहीं है फिर। वो दूसरे थे, ऊपर दूसरे थे, वो मिस हो गए मेरे से। अबे एक तो इस जगह का रास्ता कहाँ से, फिर से मैं कहीं पे खो गई। ठीक है वो अलग थे, हाँ वो अलग थे। ये इस जगह का रास्ता जहां से भी है ना, मैं ढूंढ के परेशान हो गई। यहाँ पे कोई और होंगे, यहाँ पे दूसरे होंगे। आई अरे अरे मैं अटक गई हूँ। अरे आई एम ओह ट्रिपलर। ये तो सच्ची में फैंटास्टिक बीस्ट हो रहा है। हेलो सॉरी गाइस, तुम्हारी लूट हमने ले ली, डोंट माइंड। निफलर मिले यार, मेरे को पसंद नहीं है। उसमें देखे थे फैंटास्टिक बीस्ट में। सबकी मौत क्या हाल है? इस लड़के के मिशन के लिए काफी लंबा आना पड़ा मुझे। Wonder who lives here. Handy resource indeed, your field guide. बढ़िया, बताओ भी बढ़िया एकदम। You made it. इतनी दूर तुम बुलाए हो, 100 किलोमीटर दूर, जरा बताओगे काम क्या है इतना? Keeping an eye on things. I mean, इसकी बहन से Feldcroft isn't what बुलाने it used लाया to है। be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. तुम्हें पता है डम्बलडोर की भी एक बहन थी? डम्बलडोर की बहन के बारे में पता है तुम लोगों को? Feldcroft used to be a lot उसकी livelier. स्टोरी। With Ranrock's lot wandering about all the time. अगर नहीं पता और किसी को Everyone जानने का stays इंटरेस्ट out तो of बताना, sight. मैं बताऊंगी फिर। Here we are. My sister should be just inside.
वो बेसिकली इट्स मतलब Sebastian, where did you? डम्बलडोर को अपनी लाइफ में एक रिग्रेट What I think it is. था, Move वो it over मैं this इन boy. लोगों की हो जा Shriveled फिर lips बताती हूँ. cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. पागल है क्या? But we इसका? haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. बहन को किसी ने कुछ कर रखा है क्या? I'm sorry you had to see that. If you don't मैं mind. बताती हूँ बेसिकली डम्बलडोर की स्टोरी. डम्बलडोर का एक भाई था, वो तो सबने देखा है मूवी में. उसकी बहन थी जिसका पोर्ट्रेट दिखाया गया था उसमें. मूवी में याद है डम्बलडोर की बहन का पोर्ट्रेट था वो. बेसिकली डम्बलडोर और उसके भाई और बहन जहाँ रहते थे ना, तो डम्बलडोर बचपन में बहुत शरारती था. और उसने ग्रिंडलवाल्ड के साथ, ग्रिंडलवाल्ड याद है ना, फैंटास्टिक बीस्ट वाला, वो दोनों बचपन में बहुत बढ़िया फ्रेंड्स थे, ग्रिंडलवाल्ड और डम्बलडोर. बट इन लोगों की आपस में किसी चीज को लेके लड़ाई हो गई थी, क्योंकि डम्बलडोर उस चीज से अग्री नहीं करता था. ये जो ग्रिंडलवाल्ड था, इसको डार्क मैजिक और ज्यादा, मतलब उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना था, वो रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी, और लिमिट्स अपनी क्रॉस करे दे रहा था. डम्बलडोर और उसकी लड़ाई हुई काइंड ऑफ, और इन दोनों की लड़ाई में इसकी बहन बीच में आ गई. तो किसी ने, अब डम्बलडोर ने वो स्पेल मारा था या ग्रिंडलवाल्ड ने मारा था, ये अभी तक क्लियर नहीं है. उन दोनों की लड़ाई में स्पेल उसकी बहन को पड़ गया, और उसकी बहन शायद से, मुझे ढंग से क्लियर याद नहीं आ रहा इस टाइम, करेक्ट याद है ना, या तो पागल हो गई थी या नहीं, हाँ क्या कहते हैं, बहन उसकी मर गई थी. और उसकी बहन के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, जहाँ पे ये पहले रहते थे ये लोग, डम्बलडोर, ग्रिंडलवाल्ड के पहले की बात है, जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहां पे जो उसकी बहन थी ना, वो भी पहले मैजिक वैजिक कर पाती थी. बट 3 मगल्स थे, 3 मगल्स ने उसकी बहन को इतना बुरा टॉर्चर करा था, पता नहीं उसकी बहन के साथ क्या किया था, कि उसने अपने मैजिकल एबिलिटीज खो दी थी, और वो बेसिकली पागल टाइप की हो गई थी. और उसके डम्बलडोर के बाप ने उन 3 मगल बच्चों को बहुत या तो मार डाला था, या फिर उनके साथ कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से वो एazkaban में चले गए थे. तो इतना सब कुछ होने के बाद उसकी फैमिली, डम्बलडोर की फैमिली पूरी शिफ्ट हो गई थी वहां पे, शायद से जहाँ पे डम्बलडोर रहता था. वो गॉड्रिक्स हॉलो था या फिर कहाँ गया था मुझे याद नहीं. डम्बलडोर की फैमिली जब शिफ्ट हुई थी वहां पे, वो ग्रिंडलवाल्ड से मिला था, और उन दोनों की लड़ाई में उसकी बहन मर गई थी. और इस बात का रिग्रेट डम्बलडोर को उसकी लाइफ टाइम में था. और ये भी थ्योरी है लोगों की, कि जब वो, याद है हैरी वो लॉकेट लेने गया था डम्बलडोर के साथ, जिस पार्ट में डम्बलडोर मरा था, वो कप से पी रहा था जब, तो फिर वो कुछ कह रहा था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट वो इस बात का रिग्रेट कर रहा था उस टाइम, कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया. ऐसा थ्योरीज भी है. बट ये बहन, उसके बहन के साथ जो हुआ था, ये तो मैंने बुक में पढ़ा है. दिस इज लेजिट स्टोरी. बाकी वो थ्योरीज डिफरेंट चीज है. Just जैसे need a इसकी moment बहन alone. पागल है ना, डम्बलडोर की भी पागल हो गई थी, और फिर उसके बाद Poor मर ही गई थी. Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it.
Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. मुझे डम्बलडोर के बहन की स्टोरी बहुत वैसी Your लगती है, faith in Sebastian curiosity is वाले. misplaced. Some sort of dark magic Basically cursed उससे Anne, तुम डम्बलडोर की and the goblins personality aren't likely समझ to सकते explain हो. themselves anytime soon. और उसका और Giving her ग्रिंडलवाल्ड का hope connection. is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. अरे Ranrock's loyalists are capable of so much मैंने more बताया than था people ना realize. डम्बलडोर और They should ग्रिंडेलवाल्ड not के be बारे में भी underestimated. थ्योरीज है कि डम्बलडोर एक्चुअली ग्रिंडेलवाल्ड को पसंद करता था All the ये सब. debris you'll see is अब from उसका whatever's going उतना on तो at that पता नहीं बट abandoned estate. डम्बलडोर और They've ग्रिंडेलवाल्ड been बहुत digging for something. अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे के बट ये मतलब इन लोगों की लड़ाई हुई फिर उसकी बहन मर गई इन सब के बाद ऑब्वियसली हेट करने लगा फिर वो Up there, ग्रिंडेलवाल्ड को on that plateau, मारना where पड़ा they उसे curse मतलब हराना Anne. पड़ा ग्रिंडेलवाल्ड को. ग्रिंडेलवाल्ड ऐसे हैरी पॉटर way. में दिखाया था, तुम लोग ने नोटिस किया है ना या नहीं किया? मतलब उसका नाम और मेंशन दिखाया था और उसकी शक्ल भी दिखाई थी शायद चैंस के बैंड में. Ranrock knows what हाँ he दिखाया did. था It's an दिखाया honor था to be a ग्रिंडेलवाल्ड part को. of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. तुम्हारी तो बहन के टको. I will make you. अयो नहीं ज्यादा हो गया. I won't rest. I will make you You've made your last mistake. अच्छा छोटू चाय लेके आ पहले. One less human to worry it. You're good, but I'm better. Too slow. I don't think you... Nice try. You almost had a lucky shot. How nice of you to stop by. Is that it?
ही क्यों पड़ा है? उधर वो भी खड़ा है ना. Why don't you come up here? I won't rest. Put me down. Oh, little moon calf. Oh, that was meant for me. Was that your best? You can't stop us. You're making this too easy. यार I forgot इसका पर्पल वाला वो कैसे उतरता है. You call that spellcasting? Missed me. तेरी पैन की आँख. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I मुझे tried इसका to बस warn ये you. नहीं समझ में आ रहा था इसका पर्पल वाला वो कैसे चेंज होगा. जैसे वो पर्पल वाला इसका टूटा हो गया काम. Reparo. हाँ हाँ, इसके बाद में तो ब्लैक का मेंशन था. याद करो ढंग से. जिस टाइम पे आई थिंक डेडली हॉलोज पार्ट 1 में दिखाया था कि 2 में दिखाया था, मुझे क्लियरली याद नहीं है. डम्बलडोर की जो वॉन्ड थी, एल्डर वॉन्ड, वोल्डेमॉर्ट जब उसके पीछे पड़ा हुआ था, एक लड़के की फोटो दिखाई थी. आई थिंक जब हैरी पॉटर गॉड्रिक्स हॉलो में था या फिर कहाँ था, याद नहीं. मुझे क्लियरली याद नहीं है. एक लड़के की फोटो, एक लड़के की मेमोरी दिखाई थी. माय बैड, फोटो नहीं मेमोरी थी, जो कि खिड़की से नीचे कूद रहा था और वो सब मेमोरीज याद है. और फिर एस्केबान में इन लोगों ने ब्रेक इन किया था. और एस्केबान में वहां पे ग्रिंडलवाल्ड से पूछते हैं कि वो एल्डर वॉन्ड कहाँ गई, क्योंकि डम्बलडोर वो वोल्डेमॉर्ट उसके पीछे पड़ा हुआ था. तब उसने बताया था कि वो डम्बलडोर के पास है. याद करो तुम, अगर ढंग से याद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा. ये चीज मैंने बाद में रियलाइज करी थी. अभी मैंने रिसेंटली जब हैरी पॉटर दोबारा देखी ना, तो मैंने तब रियलाइज करा कि ग्रिंडलवाल्ड को भी दिखाया था हैरी पॉटर में. उससे बेसिकली ये पूछने गए थे कि वो कहाँ पे एल्डर वॉन्ड. अरे रे, मैंने नाखून तोड़ लिया अपना. नाखून तोड़ लिया, टेबल पे भिड़ गया. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, बुड्ढा flames सा were था. shooting from the estate. बहुत बुड्ढा Before सा my था. uncle and I could stop एस्केबान में her, एकदम Anne कोपचे में rushed बैठा हुआ था out, दीवार में racing चिपक के. towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio.
एक्सप्लोर एरिया वहीं था क्या? एक्सप्लोर एरिया के बाहर आ गई मैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और क्या है? What am I missing? एक वो Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. बिल तो जॉनी डेप ने ही प्रेस प्ले करा था। हाँ उसके बाद वाला तो जॉनी डेप का फैन बेस ही अलग है भाई। बट उस केस के बाद से वार्नर ब्रोज एंड ऑल मैं अंदर कैसे जाऊं? अंदर जाने का रास्ता तो होगा। Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Obviously, मुंह जलाया है उसका literally. This well looks familiar. Familiar कैसे लग सकता है तुमको? Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. एक मिनट. When? Give me a moment. I'll explain in a second. ये वो जगह तो नहीं जो उन लोगों ने ठीक करी थी? वो वाली ना हो ये जगह? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was... अभी तो और आएगी फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज। अभी तो वो कंटिन्यू होगा। The keepers, like in Quidditch, and you found a pensive I think in the पूरी library. स्टोरी फुल स्टोरी डंबलडोर उसकी दिखाएंगे वो लोग। I realize it's a lot to take in. अगर I'm वो not लोग even sure I understand it all yet. डंबलडोर का बैकग्राउंड भी दिखाते ना फैंटास्टिक बीस्ट में एकदम ऐसा गगनचुंबी परफॉर्मेंस। ये मैंने क्यों बोला मुझे पता नहीं बट मजा आ Let me see जाएगा। if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? जब मैं पहले इसको तोड़ रही थी तो टूट नहीं रहा था। Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's trap. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. You're not going to believe this. ये वाला mirror है क्या? I can see the undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. ये वो वाला mirror है। ये वो है devil's snare। I know it sounds strange. Honestly,
Nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you First didn't really वाली याद आ understand गई. it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the undercroft from here. Ominous will be floored. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. ये वो नहीं है, ये वो मिरर नहीं है, बट ये अंडरक्राफ्ट कैसे देख पा रही है? ये वो वाला मिरर नहीं है फिर, अगर इससे ये ट्रैवल कर पा रही है तो मुझे लगा वो वाला मिरर है. Why would the door lead us here? Sebastian, look. ये एक और पेंसिव ना हो इसमें. तूतिया बना भाई, ये गेम बहुत तूतिया बनाता है. ओह, पोर्ट्रेट जो गायब था वो यहाँ का था. जो पोर्ट्रेट मिसिंग था. Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ominous शायद से descendant है I'll be ना in उसका? touch. Till then. Salazar Slytherin का? फुल ज़्यादा ही सेबेस्टियन के साथ घूम रहे, किसको प्यार ना. अगर मेरा कैरेक्टर लड़का होता तो. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. ठीक है, नहीं बताएंगे. पक्का. अब अपने क्वेस्ट कर लेते हैं. एक सेकेंड, बहुत सारी नई चीजें भी मिली हैं. ये देख रहे हो साइड क्वेस्ट कितने हैं यहाँ पे. आई थिंक मेरे को ये सब भी सीख लेने चाहिए. एक्वायर एंड यूज अ वेनमस टेंटाकुला. एक्वायर एंड यूज मैंड्रिक ऑन मल्टीपल एनिमीज साइमल्टेनियसली.
मैंड्रेक और टेंटाकुला। मेरे पे क्या क्या है अभी इन्वेंटरी में? ये नहीं। मोंग्रेल फर, स्पाइडर फैंग। मेरे पास दोनों ही नहीं है, ना मैंड्रेक है ना वो है। शॉप से जाके खरीद लेते हैं। कहाँ पे है वो वाली शॉप? द मैजिक हॉग्स में सप्लायर ऑफ फ्रेश प्रोड्यूसर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, यही है शायद से। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. What will I do without her? Oh, it's you! What a pleasant surprise. यहाँ पे तो नहीं मिला, ये सब भी बेच देती हूँ उनको। You've a good head for business, haven't you? यहाँ पे नहीं है तो No कहाँ one पे can हो say I सकता है? don't keep a stacked shelf. और कहाँ हो सकता है? पोर्शंस वाली क्लास में लगता है मिलेगा, जाके देख लेते हैं। Don't you fret, biscuit. साइड I मिशन shall ऑफलाइन sort पार something कर लिया करो फिर बेस्ट रहेगा। अरे साइड मिशंस मेन क्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं कभी कभी, Potions to Madame और Marley. उनको करना ही पड़ेगा Saved me a lot क्योंकि of time लेवल and अप भी trouble. जरूरी है ना। टेंटाकुला तो कहीं है ही नहीं, वो मुझे शायद से क्लास से ही मिलेगा। I hope to see you again. Farewell for now. ये लोग ही तो स्ट्रीम भी कर ही सकते हो। हाँ वही। I mean, ऐसा नहीं, अब देखो बीच बीच में स्ट्रीम के साथ साथ ही मतलब मेन क्वेस्ट के देखो साथ साथ ही वो चलते हैं सारे के सारे साइड क्वेस्ट। तो अगर मैं स्ट्रीम करूंगी तो बीच बीच में साइड क्वेस्ट आएंगे ही आएंगे, वो बात है। नो नो टिप फॉर यू, मैं खुद गरीब हूँ। Did I just destroy the page? अच्छा ठीक है, बच गया। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हो गया, हो रहा। Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a door. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently, had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. आज मैंने जो करे वो भी तो साइड मिशंस थे, बट सारे के सारे Because we इंटरेस्टिंग थे। don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derecal feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Dericals. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but added up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of a measle. Oh,
You should have heard them. No. अरे कितना बोलेगी? हो गया, समझ गए, तुम्हारे पास है And I बहुत do like कुछ. to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the thank you very time, much. and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you. I will. Take all the time you need. Yes, Thank you for stopping by. A treat to have you here. Yes, what do you have for sale? Now, what sorts of Beast Buy products might you be looking to acquire? Crystal hair, toad horns, unicorn hair. जो मुझे चाहिए वो नहीं है तो इसके पास. Moonka, hippogriff, puff skin. जो मुझे चाहिए वो है ही नहीं कहीं पे भी. I think I can only get it in herbology class. तो ये वाला side mission करने का फायदा नहीं है. Consider yourself welcome. भाई वो जानवरों के साथ रह रहे कि उसकी हंसी भी जानवर वाली हो गई थी. ये वाला नहीं कर सकती. Practice flying near the spires, flying near keen bridge target. ये वाला भी खाना. Acquire and use an invisible repulsion and thunder repulsion against enemies. ये spell सिखाएगा. Collect roll bogies. Depulso on leviated enemy. इसके लिए मेरे को Depulso सीखना. Depulso तो है. Speak with Sebastian. इतने सारे साइड मिशन है, तुम लोग देख रहे हो. इसको मैं ऑफलाइन भी कैसे करूंगी? आधा गेम साइड मिशन है इसमें. मेरे पे जादू कर दो, कोई अच्छी सी लड़की से मैरी करूं. यार वो तो गॉड का काम है, वो हमारा काम नहीं है. एक सेकेंड, ये इमेल्डा राइज ये इतना दूर के दिख रही है मुझे. एक्सक्यूज मी मिस, वेयर आर यू? ये देखो कहाँ घूम रही है. उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लास ही कर लेती हूँ. इतना लोचा नहीं करना मुझे. मैं क्लास में जा रही हूँ. हटो, बहुत दूर है. ये करने के बाद जाऊंगी उधर. Hogwarts has brought me and my siblings. चलो 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 चलो. अच्छा अभी और ऊपर जाना है. चलो 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 चलो. Off on another adventure, are we? ये वाली क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. ये क्या है? And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse.
With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. और ऊपर जा रहे हैं शायद से हम लोग। और ये तो वही जगह है जहाँ से डंबलडोर मरा था ना? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. उसका टकार बोल रहा हूँ, उसका नाम ठाकर है शायद से। Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. और ये भी इंडियन है, उसका एक्सेंट ऐसा कर रखा है। Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. ये भी इंडियन है। Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. What was good that did. This was his old telescope. Looks practically brand new. Confringo! इसी डेक से नीचे से हैरी ने पूरा देखा था सीन जो हुआ था। A pristine night for stargazing. Do not let it delay. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी क्लास से ज्यादा तो वो लड़का दिखा रहा है ना इसको। क्लास में थोड़ी सीख रही है ये। The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Recall करके, recall ने It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then.
It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? जब ये ऐसे spell करती है, close to the school I think you should do the उसको honors. पड़ जाए तो? Go on. The constellation should appear near the center of your view. Point, telescope, zoom out, rotate. Zoom. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Okay, ऐसे. हो गया. I was right about the तेरे को tables. भी देख They लूँगा. really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. ये place पहली बार देखी है मैंने. ये वाली. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. देख रखी. It has कहाँ पे goblin कब cut glass दिखाते हैं ये वाली and a place? gobbledygook याद दिलाओ. inscription. मैं भी मुझे याद आ I'm जाए. practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. ये जगह. मुझे उतनी पहचान में नहीं आ रही है जगह. Maybe कोई scene Never हो. do get tired of seeing the Jump astronomy करी tower at थी. night. What a एक view. नया से. पता नहीं मेरे को ये वाली जगह नहीं याद आ रही. Recoil नहीं कर पा रही. और क्वेस्ट ढूंढते हैं, रुको. ठीक है, अभी इसको भी करने के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ा लेवल है, और इसके लिए मुझे एक सेकंड, मुझे ये वाला स्पेल सीखना ही पड़ेगा. ये वाला इसके लिए इम्पोर्टेंट है. अरे यार, जाना पड़ेगा. हर्बोलॉजी क्लासरूम कहाँ पे है? ग्रीन हाउस के पास होगा. ग्रीन हाउस ये रहा. तुम्हारी वजह से अब हम रिकॉल को रिकॉइल बोल रहे हैं. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. मैंड्रेक कहाँ पे देखे थे मैंने? एक यहाँ पे है, एक क्लासरूम, आई मीन ये ग्रीन हाउस इधर है, दूसरा कहाँ है? ये क्या है? मैंड्रेक मिलेंगे कहाँ पे? ओके, डिटेनली उसी तो मैंने ही लगाए थे ना. मैंड्रेक बात करनी पड़ेगी क्या टीचर से? रुको. What made you want? What is the reason for these additional assignments? What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing भैया you कब to आने learn वाला? a सोनिक new रात को charm, आएगा. Wingardium Leviosa.
Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. हाँ, या तो मैं थोड़ा टाइम स्पीड अप करूँ, ऐसा तो समझ नहीं आ रहा। मैंड्रेक कहाँ से लाने हैं, रुको टाइम स्पीड अप करके देखते हैं, दिन के टाइम आते हैं यहाँ पे। अभी रात हो रही थी। गार्लिक हॉट, हाँ ट्यूबलाइट, मैं ट्यूबलाइट हूँ इसलिए। मैंड्रेक, यार मैंड्रेक वाला नहीं समझ में आ रहा। ना वो समझ आ रहा है वेनेमस। किसी का वॉक थ्रू देखना पड़ेगा क्या देखने के लिए? तो इसमें ना यही प्रॉब्लम है, इसमें थोड़े से इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर हैं। अब जैसे मैं हूँ ठीक है, अब मैं पूरे एरिया में ढूंढती फिर रही हूँ कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अगर ये लोग थोड़ा सा दिखा दे कि कहाँ पे है तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा प्लेयर के लिए। वैसे तो उसमें सिंबल दिए हुए हैं, एक सेकंड, सिंबल दिए थे, सिंबल देख लेते हैं। मशरूम का सिंबल, मशरूम सिंबल कहीं दिखता है तेरे को? झाड़ू, गेट, सिंबल भी तो नहीं है। मशरूम, मशरूम का सिंबल है ही नहीं, देख लो, ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रहा। मैम से सीखो कुछ, कुछ तो अच्छा बना दें। मशरूम में नहीं है, पूरे मैप पे देख लिया, मशरूम वाली जगह नहीं मिल रही। मेरे को किसी का वॉक थ्रू देखना पड़ेगा जिसने कर रखा हो ये मिशन। हाउ टू कंप्लीट प्रोफेसर गार्लिक्स असाइनमेंट किसी ने दे रखा है फाइनली। ये रहा, इधर है कोपचे में, इससे ज्यादा कोपचे में नहीं रख पा रहे थे। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हम लोग उस टाइम पे देखो शॉप्स ढूंढ रहे थे ना, याद है शॉप्स ढूंढ रहे थे ये सेम चीज के लिए, वो एकदम एकदम कोपचे में थी। More cozy than Hogsmeade. Aloha Mora. Revelio. झाड़ू नहीं यूज कर सकते यहाँ, हॉग्समीड के अंदर झाड़ू यूज करना अलाउड नहीं है। प्रोटेक्शन स्पेल को ही लगा हुआ है।
अब ये वाली भी बकबक करेगी क्योंकि Revelia inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Lumos. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Doggies मैडम and पॉम्फ्रे Death थी Cats. ना Oh, mind हैरी you don't पॉटर knock में the जो थी mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. मैंने जानबूझ के सीट भी ले लिए ताकि आगे काम Be आए sure to stop by soon. Such a bairn being a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Let me answer. Confringo. Lumos. Hogsmeade, here I come. नेक्स्ट मिनट मेरे पास कुछ सेल करने के लिए भी तो होगा पक्की बात है बेलिट्रिक्स थी माय बैड शायद है वो हाँ दो तीन चीजें हैं सेल करने के लिए देखते हैं इसके लिए पैसे बनते हैं या नहीं वेनेमिस वाले के लिए अगर पैसे मिलेंगे उसके लिए तो फिर Because I'm not entirely sure I have them in stock. But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do 100 रुपए with से पीछे रह money. गए 100 रुपए और Doors चाहिए थे always open. You be sure to stop by soon. कोई नहीं अब मैं वहाँ पे एटलीस्ट ग्रीन हाउस में जाके वो उसकी क्लास लेके आई मीन वहाँ पे सीड लगा के अपना कर सकती हूँ काम I've always said that travel broadens the mind. I miss having my own bedroom. Another thing. मेरे पास और स्लॉट्स नहीं है यूज करने के लिए इसके अलावा ये नहीं चाहिए यार एक ही पॉट है मेरे पास तो मैंड्रिक ये भी तो लिया था इनकरेक्ट पॉट साइज लो मैंड्रेक उगा सकते हैं और जो चीज उगानी नहीं सर मत तोड़ना इसका एक सेकेंड आई कैन फिक्स इट एक मिनट
नहीं, I cannot fix it. I thought altering spell करूँगी तो फिर ये बड़ा हो जाएगा. कुछ नहीं कर सकते, पैसा ही कमाना पड़ेगा. हटो, पैसा चाहिए मुझे. What are you up to now? पैसों के लिए कहाँ जा सकती हूँ मैं? दूसरा क्वेस्ट कर लेती हूँ तब तक, अगर वो नहीं हो रहा तो. ये बहुत दूर है. इनविजिबिलिटी पोशन एक्वायर एंड यूज, इसके लिए भी पैसे लगेंगे. ट्रोल बुगीज भी नहीं ले सकती. स्पीक विद सेबेस्टियन, ये कर सकती हूँ. वो लेवियोसा वाला स्पेल ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे बाकी मिशंस जुड़े हुए हैं. मेन क्वेस्ट वाला. I'd never have a harsh word to say about it. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Oh, ये तो वहाँ हॉल आ गई. Be included. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? हाँ बिल्कुल. इसी कर्स ने तो नेविल के माँ बाप को पागल कर दिया था. उस हद तक टॉर्चर किया था कि उसके माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पहचान रहे थे. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. ये वाला कर लेते हैं. Revelio. इसका आसपास कोई दूसरा कहाँ है? नीचे है.
And how will I go downstairs? कोई नहीं, अंदर है ना, अंदर खजाना है ना? हाँ है, इसको बेच के पैसा कमाऊंगी। ये हाथी, हाथी इज सेकंड, 2 4 6 मतलब उल्लू, 5 1 6 मतलब 5 चाहिए, 5 मतलब 2 1 2 3 4 5, वो केकड़ा। How nice to see you, my young friend. अब मैं इसको बेच के वो ले सकती हूँ। ओह फाइनली। Hi Mahi. How much game have you completed till now? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. मेरा अभी शायद से 15% हुआ है मुश्किल से, हाँ 15%। और मैं, ये मेरा 3rd डे चल रहा है अभी। आज इसको एटलीस्ट 20% तो करके मानूंगी। यार मैं उसकी झोपड़ी भूल गई। अच्छा यही है ना, यही है यही है। ये मुझे मिल ही नहीं रहा था जब मैं ढूंढ रही थी। Just 37 मैंने 30+ आवर्स क्या अकॉर्डिंग टू द गेम। मैंने, मेरा कितना हुआ है सेटिंग्स में दिखाएगा ना। लो, अरे लोड नहीं, सेव गेम। सेविंग, ये सेव क्यों नहीं हुआ? और सेव हुआ तो मुझे दिखा क्यों नहीं रहा? हाँ 9 आवर्स। मैंने 9 घंटे खेला, 9 घंटे में 15%, इतना भी बुरा नहीं है। Venomous tentacula. Well, what say we show you some of what's available? यार 10 रुपए से 10, रुको चोरी करके आती हूँ आंटी, 2 मिनट देना, पैसा नहीं है मेरे पास। Me? Did you dress up for me? साइड क्वेस्ट सारे किए हैं, मैं साइड क्वेस्ट करती जा रही हूँ बीच बीच में जितने भी मिलते हैं, और मेन वाला भी साथ ही साथ करते जा रहे हैं। Rebellion. यार मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये कौन सी जगह है? Rebellion. मुझे कुछ अंदर दिख रहा है, बट यहाँ जाने का रास्ता नहीं होगा, है ना? यहाँ अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये खुलेगा नहीं दरवाजा। ओ खुल गया। Lumos. मिल गए। पूरा का पूरा खेलूंगी इस गेम। सेम मैं भी वही कर रही, मतलब यार साइड क्वेस्ट करने में पता है क्या मजा आ रही है कि और ज्यादा हॉगवर्ट्स एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। मेरा ग्रिफिंडोर ही है। I mean, मेरे को हफलपफ और रेवेनक्लॉ, हफलपफ ज्यादा पसंद है, बट ग्रिफिंडोर इज मोस्ट फेवरेट। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हैरी, बिकॉज उसकी जो वो है एबिलिटी, उसकी वजह से।
डिग्रेड तो नहीं हुआ ना ये? नहीं, दोनों की पावर सेम है। Have a look around. I'll be अरे यार, just a minute. Well, what say we show you some of what's available? मुझे तो मैं जैसे जैसे खेलती जा रही हूँ, पता है इस हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलने का बेस्ट पार्ट क्या है कि मैंने बुक पढ़ रखी है और बुक में जो चीजें है ना, जैसे कि जो मूवीज में दिखाई भी नहीं है, जैसे वो पीव्स द पॉल्टरगीस्ट, वो जो शैतानी करता है पीव्स, उसके बारे में बुक्स में मेंशन था। वो जो एल्फ का किचन था और जो एल्फ मतलब साफ सफाई करते थे हॉगवर्ट्स में, उस सब के बारे में बुक्स में मेंशन था। तो कुछ चीजें हैं जो कि मूवी में थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक में थी। उसको फाइनली, क्योंकि तुम जब बुक पढ़ते हो तुम सब विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड में कि ऐसा ऐसा होगा, बट गेम में वो चीज सब मुझे देखने को मिल रही, तो वो सब चीजें जब ऐसा देखने को मिल रही है ना, तो एकदम ही अलग ही बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. ये भी ले लिया फाइनली। गेम में बहुत डिटेल्स ऐड किए हैं जो ऑफ कोर्स मूवी में नहीं कर पाए। हाँ, मूवी मतलब फिर वो ऑलरेडी इतने पार्ट्स की मूवी है, वो और ज्यादा स्ट्रेच आउट हो जाती। क्या ना, वो लोकेशन पे जाके बटरफ्लाई लेके आना है वहाँ, बस उस पेंटिंग पे। अच्छा, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैंने ऐसी चीज़ थर्ड टाइम देखी है। मैं बस खोल के देख लेती हूँ कि है क्या, पता नहीं मुझे उसको यूज़ कैसे करना था। यार ये ऐसे ही कैसे यूज़ हो जाएगा? किसी एनिमी के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा ना। मल्टीपल एनिमीज, अब मुझे एनिमीज ढूंढने पड़ेंगे। बाहर निकलती हूँ यहाँ से, फिर देखते हैं। मूवी बोरिंग हो जाती है अगर ये सब दिखाने लगते। वही बट बुक्स में वही तो बात है, मैं बुक्स इसीलिए पढ़ती हूँ सिर्फ और सिर्फ, उसमें वो बस डिटेलिंग ज़्यादा होती है। किसी चीज़ के बारे में अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है, अगर उसकी बुक है तो डेफिनेटली उसको पढ़ लो एक बार। कहीं ना कहीं तो वो मिल जाएंगे मुझे। मैप पे देखना पड़ेगा। मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे बंदे जहाँ मिले। बट ये ज्यादा दूर है, कोई पास में नहीं है। एक ये है, यही ठीक है। मल्ली हम किताबी कीड़े नहीं है भाई। देखो मेरी हैबिट है, मैं पढ़ लेती हूँ। मैं भी पहले इतना नहीं था शौक मुझे, बट मैंने जब अरे रे रे, मैं एक्चुअली मतलब जब मेरा भाई है वो लाया था मूवी, वो बुक अपने फ्रेंड की, उसके फ्रेंड की बुक मैंने पढ़ी और उसके बाद से मतलब जो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसको शुरू ही कर दिया। अरे यहाँ पे बैंडेज थे ना, कहाँ गए? तो दिखे थे मैप में, गायब हो गए। नेवर माइंड। It's like a place right out of a storybook. ये रहे, नीचे भी रहे, पर मुझे 2 एनिमी नहीं मल्टीपल चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 है। हेलो,
बस I इनके couldn't ऊपर wait to get out of Hogwarts when I was बस there. इनके ऊपर छोड़ दूँ. I'll check your pockets after you're dead. I never एक सेकंड, मुझे दो एनिमीज साथ में चाहिए आजू बाजू. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. about that goblin help you. Assignment's all finished. मर गए. अच्छा और आ गए. बाय बाय. अरे हम बहुत बुरे हैं फाइट में. एक मिनट, टाइम आउट. How did that feel? Is that the best you got? रेड वाली कैसे जाती थी? अरे उसके मुंह पे क्यों? रुक तेरी. It's shameful what you've done to helpless beasts. हमें अभी तक उसके कॉम्बिनेशन समझ में नहीं है. अलग अलग उसके स्पेल्स के कॉम्बिनेशंस. तो मैं जो भी अंटी शंटी जो भी हो जाता है वो मैं मार देती हूँ. चलो बायोलॉजी क्लास अटेंड करते हैं. ये तो हो गया. अरे वाटिस नहीं है बल्ली, मतलब मैंने ट्राई नहीं करा. स्टडी भी जब करते हैं हम, जब एग्जाम हो. स्टडी करने में और बुक्स पढ़ने में बहुत डिफरेंट है. काट ले मुंह काट ले उसका. काट मुंह खा जा. अरे ये सब नहीं देखना हमको. हैप्पी. एक सेकंड, पूरी क्लास ही मिस हो गई क्या? शायद से मैंने पूरी क्लास ही मिस कर दी. कोई नहीं, हमें देखनी भी नहीं थी. आप बताओ मैम कैसी हो? I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. अरे books in the sense when you have to study about and learn something, तो तुम तब तो obviously नहीं मन करता. जब तुम सिर्फ एक स्टोरी पढ़ रहे हो तो it's like you are watching a movie but like खुद की imagination से तुम पढ़ते जा रहे हो, माइंड में इमेजिन करते जा रहे हो. वो सिर्फ एक जो बुक रीडर होता है ना उसको समझ आएगा जो मैं बोल रही हूँ. Can levitate and move objects, control its position, your movement and use to find. अच्छा. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you. Wingardium Leviosa. You're a natural. ये हो गया. अब क्या बचा? तेरे को नहीं पता क्या है? पकड़म पकड़ाई नहीं खेला है तुम, बट मुझे वो नहीं पता जो तुम बोल रहे हो.
अरे यार यहाँ पे भी उड़ के जाना पड़ेगा। हाउसमेट से शॉर्टकट लेके फिर जाना पड़ेगा। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. क्रॉस फिंगर्स। ओके, मैंने ये चीज नई चीज सीखी, मुझे नहीं पता थी। अरे रे 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 रे, मैं नीचे जा रही थी। ये पागल है क्या? नीचे उतर। Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. ट्यूबलाइट को Flipendo. समझ नहीं आएगा। Once you've completed the necessary tasks, Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. How nice to see you, my young friend. I wonder what that was. That did it. Accio! Wingardium Leviosa. एक्यो करो तो विंगारियन लेवियोसा खुद हो जा रहा है। But yeah, this is not enough. I need one more. This is not enough. This is not enough. अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? This is not enough. Accio! Wingardium Leviosa. ये मैं इसका करूं क्या? ये ऊपर चढ़ने के लिए काफी नहीं है। नहीं, मुझे कोई यहाँ से रास्ता दिख रहा है चढ़ने के लिए। पहले उसके ऊपर चढ़कर वो I don't think I can do a spell under me. Wingardium Leviosa.
अगर मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ तो फिर मैं उस पे स्पेल नहीं कर सकती। कोई और बॉक्स या कुछ है आसपास? Wingardium Leviosa. एक साथ करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। वो डब्बा ही नीचे गिर जाता है ये जब चढ़ती है तो। मैंने कुछ और देखा। Leviosa. ठीक है। लेवियोसा सिखा के अगर लेवियोसो ही यूज करना है तो फिर सिखाया क्यों? Gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. Dead end. Must be another way in. अरे यार उधर घूम के इसको खींचे लेना चाहिए था उधर से फालतू में। आओ इधर आओ। ये इस टाइम इसके जो आउटफिट है ये रेवन और स्लिदरिन का आउटफिट का मिक्सचर लग रहा है। ओके गेट तो लिफ्ट हो गया। Push the gate open, don't blast it. So I can blast it. अच्छा। Okay, it has to be really quick. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Hippogriff. Highwing. ये निक फिर से हिपोग्रिफ मिस करेगा। Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed?
This is our chance. Go! Blasted! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. एक मिनट ऊपर जाना है और यहाँ पे ये बॉक्स है वो बॉक्स नीचे गिरा Ouch. Levioso. Here. Guardian Leviosa. Leviosa. This is confusing. अरे यार एक साइन यहाँ पे है चढ़ने का कुछ बॉक्सेस यहाँ पे है चढ़ने के लिए क्यों रिपल्सो मार रही है रुक जा बहन रुक जा How do I take it up now? नहीं ऐसे नहीं होने वाला ये ऐसे नहीं हो रहा एक मिनट हम जा ही गलत रास्ते रहे हैं Not the safest place to sneak into. फालतू में उधर ओके I'm sure it'll be harder to kill a moon. Confringo. Someone's going to regret trespassing. Potato! No one hides from me. I'll spot you. You're having the knack. Is that meant to be an attack of some sort? Confringo. Confringo! Go! Dodged in it. Confringo.
Alohomora. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. You're going home in a wooden box! अच्छा Levioso! Oh. Levioso! Confringo! Incendio! यार तेरी माँ क्या? You will not survive! Thought you had me there! Incendio! Controls पे Confringo! My death! Confringo! दोनों डेड. Alohomora. मैं अपना ये लेवल अनलॉक कैसे करूँगी? लेवल 2 और ये सब. घड़ी रिपेयर चल रहा है. घड़ी रिपेयर नहीं, ये लॉक खोल रही हूँ मैं. अदृश्य चोगा नहीं है बट एक स्पेल है जो कि गायब कर सकता है मुझे. Oh no, Deepcool's right. We need to save you from these barbarians. Revelio. हेलो बेटा. हेलो डीमन. Revelio. एक सेकेंड. यहाँ तो मैं आ चुकी हूँ. Hi, Wing. It's all right. There we go. एक और हिपोग्रिफ. There you are. Come on. Alohomora.
me. अरे ये निक मिस कर देगा फिर से 10 मिनट कितने गलत टाइम पे गया है लौंडा। अरे ये मिस कर देगा। निक ने मिस कर दिया फिर से और फिर वो मुझे डांटेगा। और अब की बार तो मैं हिपोग्रिफ उड़ा रही हूँ। C to fly slowly, ascend, descend, toggle speed। अच्छा डोंट लीव नाटी भी। अच्छा अच्छा There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. ये निक ऐसे सीन मिस कर देता है फिर बाद में बोलता मैंने खेल लिया। अरे यार इतना मस्त। Anyone can see us from the castle. This is amazing. It's incredible, isn't it? हैरी पॉटर वाला सीन भाई पानी चूका है। ये मस्त था, मजा आ गया। How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. तुमने मिस कर दिया। अभी अभी हम लोग हिपोग्रिफ के ऊपर उड़ के आए हैं। Straight out of Hallow's hands. और वो स्टोरी थी तो मैं स्किप भी नहीं कर सकती थी। He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. मेरे साथ ही होता है। तुम्हें वैसे टाइम पे जाने नहीं, तुम्हें पता है? तुमने जैसे लिखा 10 मिनट में आता हो। उसके बाद स्टोरी दिखाई हिपोग्रिफ वाली। I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. बेसिकली तुम जैसे गए तुरंत इसने वो दिखाया कि ये लोग पोचर्स हिपोग्रिफ को पकड़ के कासल के अंदर ले गए और उसके बाद आई न्यू जस्ट कि भाई उड़ने का टाइम आ रहा है अब। ये Away, Highwing, away! I have a hippogriff. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. You can't imagine how inconvenient. Please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Giveaway. I'm not doing giveaway right now. I will do a giveaway in the future. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Hagrid तो होगा ही नहीं। Here's a pleasant surprise. हाँ।
मेलो लीफ नहीं है मेरे पास, लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। एक काम करो, अगर तुम्हें वो वाला सीन रीवॉच करना है तो तुम रीवॉच कर लो, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आती हूँ। आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट। 4 घंटे से लगातार स्ट्रीम कर, मैं आ रही हूँ। तुम वो तब तक सीन रिवाइंड करके अगर तुम्हें वॉच करना तो तुम देख लो, मैं आ रही हूँ। बेला गायब हो गई, उसकी चेयर चोरी कर लेते हैं। कोई नहीं, मेरा सुंदर सा यूनिकॉर्न तुम लोग ने देखा नहीं, ये देखो इसकी नाक। आई एम बैक। अभी कहाँ जाना है मुझे? अच्छा हाँ, उसने बुलाया मुझे मैप वाली जगह पे। दो हिपोग्रिफ है मेरे पास, 2 हिपोग्रिफ है मेरे पास, ये भी ठीक है। मेरा गियर कहाँ गया? दिख गया। ये आइडेंटिफाइड नहीं है अभी।
टोपी बेकार है। So he's in the maps chamber. अच्छा एक मिनट। Come back Valo। यार अभी ये जब स्टोरी मोड गेम्स एंड ऑल थोड़ा फिनिश करेंगे ना उसके बाद वैलो पे वापस आ पाएंगे क्योंकि सेम वैलो एवरी डे वाज गेटिंग अ लिटिल बोरिंग underestimate this तो student. फिर Their अभी मैं aptitude for magic डिफरेंट is गेम्स beyond ट्राई आउट anything करने I've ever शुरू करें seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, मेरी will किस्मत he ही help टूट गया us क्या get to हुआ Ranrock? अब तो तुम्हें टाइम I नहीं दिया retrieved a देखने के stolen लिए helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. वैलो पे वापस आ जाते I feared as much. नहीं तो I've heard an unusual amount of activity, अभी मैंने बहुत goblins दिन and से वैलो wizards I नहीं खेला है surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. इसका ट्रायल का टाइम आ गया I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. हाँ तो यहाँ तुमने कुछ मिस नहीं किया No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. मैं अभी डायरेक्ट कासल पे नहीं जा रही Lumos. अभी मैं डायरेक्ट कासल पे नहीं जा रही मैं 2-4 और साइड क्वेस्ट कंप्लीट करके फिर जाऊंगी क्योंकि साइड क्वेस्ट बिल्डअप पे बिल्डअप होते जा रहे हैं और मैं उसको अभी तक क्लियर आउट नहीं कर पा रही हूँ That outfit is most unseemly.
बिल्ली का गेम भी था, मैंने मेरा वेलकम नहीं किया। जैसे तुम नए हो। I've always said You are that new. travel broadens the mind. I don't think I can enter the dark forest with my broom, or I can go inside. कर सकती हूँ यूज, ठीक है, ये भी बढ़िया है। ओ! अभी अपनी औकात नहीं हुई इनसे लड़ने की। आई डोंट थिंक मेरा पावर लेवल इतना है कि मैं उससे लड़ सकूं। एक मिनट रुकना, उसका पावर लेवल जरा देख के आऊं। 21 है भाई, ज्यादा है। मे बी आई कैन डिफीट हिम फ्रॉम हियर, मे बी। नीचे गिर जाए फिर मजा तो। हेलो। अरे तो अंदर घुस गया, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? नहीं, अयो, यो पीछे हो गया मेरे। भाई यहाँ क्यों आया? पागल है क्या? इतना भी प्रेम तोड़ी? तेरी भैंस की आंख। ले। आउच। ले। और ले। ले। और ले। डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरते। भाई वो जब पीछे आया ना, बैंड बज गई थी ऑनेस्टली। वो जब पीछे आया अचानक से, एक्सपेक्टेड नहीं था वो इतना समझदार होगा, चल के ऊपर आ जाएगा। अब
किसी लेविटेटेड एनिमी पे डिपल्सर यूज करना है, राइट? एनिमीज तो हैं पास में, बट हमें लगता नहीं उनसे लड़ाई करनी चाहिए। किसी सिंगुलर एनिमी से करूँ तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे सब मल्टीपल हैं। कोई सिंगुलर एनिमी सबके सभी झुंड में है, और आई थिंक इनका लेवल भी हाई ही होगा। यहाँ वाले बैंडिट कैंप पे रेड मारूं क्या? आउच। Maybe I can sneak on somebody and attack. Oh, what a line! Clumsy little fool! Reducto! You'll feel that tomorrow. Not so tough now, are ya? एक टाइम पे 3-3 कैसे मार रही है? You're that hippogriff thief. Rebellion. Confringo. Rebellion. Attend divination class. जानवर में भी दिमाग होता है, hence proved. फास्ट रिप्लाई देने का क्या लोग है? मैं तो वेट फॉर वाले, आपकी स्ट्रीम पे मजा नहीं आता स्पैम करने का। क्यों? फास्ट रिप्लाई, अरे हमारी सिचुएशन भी समझिए ना सर। हमको भी तो गेम खेलते खेलते रिप्लाई देना है। कहाँ जाना है? जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो कहीं और दिखा रहा है। कहाँ जाना है मुझे जो दिख नहीं रहा? एक तरफ बोल रहा हॉगवर्ट्स जाना है, दूसरी तरफ कहीं और ही दिख रहा है मुझे। पता नहीं, यहाँ आ जाती हूँ चुपचाप। साइड क्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्डअप पे बिल्डअप होते जा रहे हैं, और वैसे साइड क्वेस्ट से मेरे को स्पेल्स एंड ऑल ही सीखने को मिलेंगे, तो मेरे लिए ही अच्छा है। पकड़ लिया फास्ट टेलीपोर्ट का फास्ट रिप्लाई। गेम खेलते खेलते वो रिप्लाई देना होता है ना, इस वजह से। फास्ट टेलीपोर्ट का फास्ट रिप्लाई नहीं, मेरे से जयदेव ने पूछा फास्ट रिप्लाई का क्या लोगे, उसको रिप्लाई दे रही थी मैं। Aloha Mora.
Levioso. This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. रिवील क्या हुआ जो ये टिंकलिंग आवाज आई मुझे? Off on another adventure, are we? बहुत ऊपर है। यहाँ पे है क्लास। वेलो वेलो की स्ट्रीम होगी तभी आएंगे। नहीं वेलो में भी तो कभी कभी मैं लेट रिप्लाई देती हूँ क्योंकि राउंड के बीच में होती हूँ। ये देखना है तुम लोगों को ये क्लासेस में जो ये ऐसा नौटंकी नाटक करता है या फिर स्किप कर दिया करूँ ये। I mean, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ते हुए ऑब्जर्व ही कर रही है। What do we have here? I hope those assignments were challenging. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? There will be hardship, I'm sure of it, but I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Excellent. I think you have it. Revelio. What do we have here? A demiguise. Mine now, demiguise. Professor, do you have a moment? I do. I'm sorry. It seems now isn't the best time after all. I sensed as much. अरे इसको कलेक्ट करना है और तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ ठीक है, हो गया। अब क्या बचा? क्वेस्ट में अब क्या बचा? The lost child. Shadow of the study. क्रूशियल स्पेल मिलेगा। अरे ये लेके जाते हैं, फाइट में काम आएगा। Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. क्या मतलब हिंट है? नहीं।
मैं इस एरिया में फर्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले यहाँ नहीं आई। तभी तो ये क्रूशियो स्पेल यहाँ सिखा रहा है। I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunts knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. पर ऐसे अंदर He's this way. से हुआ ना कि अरे hint what? Go with Sebastian. Yeah. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Poltergeist. मैं poltergeist पढ़ती थी उसको। चलो ठीक है, pronunciation सही हो गया अपना। There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. ये तो वो वाले corridors हैं। What have you and Sebastian been up to now? जहाँ पे वो Please, Chamber of Ominous, Secrets I के confided in you खून before पढ़ते about थे। what happened दिखने at में the वैसे लग Undercroft. रहे हैं at least। Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Bring them. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with trees. Well, 3 heads are better than 1. Revelio. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Alohomora. वैसे कुछ ज्यादा ही लंबा रास्ता नहीं है, छोड़ो बाद में आऊंगी यहाँ पे। I do that occasionally. पहले मिशन नहीं करते हैं, वैसे भी बहुत मैं आजू बाजू भागती रहती हूँ। एक सेकंड, वो बंद हो गया?
कैसे? उसकी जल रही है। वो जलती है तो वो बुझ जा रही है। ये क्या लोचा है? Perhaps all three braziers need to be lit at the same time. अरे तो चूतिया इतनी जल्दी। Something's happening. I hope we're ready for this. बाप रे। Revelio. नाक में दम कर दो तुम लोग। Reparo. Looks like a locked door. We may want to look around. The rubble formed a relief The for a journal person mentions facing a many snake. challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. I knew it! All known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. True heir of I'm hoping Salazar you're having second Slytherin. thoughts. तो अंदर से वो Believe सांप me, निकले। I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Sendo! Revelio. कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा है। अच्छा लूमिस यूज कर रहा। Confringo. एक मिनट। Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Oh! Good. Salazar Slytherin didn't make this easy. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. इसका कुछ निक पता है कि इसके पासवर्ड कैसे खुलेंगे? बताना। इसका तुम्हें कोई आइडिया है ये पासवर्ड्स कैसे खुलते हैं? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ट्राई करती रहूंगी तो मेरे पास ज्यादा हेल्थ नहीं और मैं मर जाऊंगी। ये लॉक्स कैसे खुलेंगे? कोई आइडिया? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. काटा काटा। ये क्या था? Matching the symbols did open it.
Was about to do that myself. Matching the symbols? got to ये it match first. तो नहीं है. Nice work. कौन से सिंबल कहाँ मैच किए इसने? मुझे तो कोई सिंबल मैच नहीं दिखा. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Lumos. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Revelio. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Lumos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. Not the welcoming sort, was he? कुछ तो दिमाग लगाता है अपने. Oh my bad होने भी चाहिए. Excellent work. We're another step closer to the script. अरे नहीं, मैंने वॉक थ्रू खोला था बट इंस्टेंटली मैंने जब उसके वॉक थ्रू पे गेट देखा सिर्फ लाइक उसको आगे स्किप करने में तो मेरा वो खुद ही दिमाग बैठ गया. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. मतलब बेसिकली वॉक थ्रू खोला था बट उससे देखा नहीं था कि कैसे करना था. वो जब मैंने गेट देखा उधर तो मैंने रियलाइज किया कि गेट पे सिंबल बने थे. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. किसी पे Crucio She कर्स मारना mentions being पड़ेगा. trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. किसको Crucio मारने वाला है ये? Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on.
Ominous has the most experience with this. He should cast it. But ये किसके You ऊपर seem to cast be in करेगा? Ominous's favor. Will you ask him about this? यार मेरे पैर. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. Confringo! If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in HOGWARTS' footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare, Crucio. Hold on as long as you can. Ready? I'm ready. ये तो खड़ा हो गया उठ के. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. ये तो हैरी पॉटर को भी नहीं मिला था. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Description है इसमें उस creature का. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous.
About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. ये promise तो बेटा Understood. टूटेगा जब तुम उसकी book ले आए हो Truly spell sorry book about तब your तो aunt, Ominous. अब तो खतरनाक वाले spell सीखे जाएंगे. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. You're pretty Thank late you. for this. Revelio. ये वाला खुलता कैसे मुझे अभी तक नहीं पता चला. बस कूदता रहता है मेरे को देख के. चलो अब कहीं और चलते हैं. Meet, big and recruit cost. ये क्या है? Alexa, turn on big light. Alexa. एक मिनट रुकना. Alexa, turn on small. Alexa, turn on small light. Discord answer के. Gaming room. जिससे स्टोन बना सके एनिमी को. मीशा की सेमी कहानी है. चलो रुकवुड के कासल चलते. Seems a pleasant enough little place. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go.
अरे तेरी Good job, Steve, aren't you? Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Gringos. I was only young, mind. Well, not like I'd fall out now. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. I didn't touch your helm. But thank you for making me... You can't stop Ranrock's rebellion! देख लिया इसने एक मिनट मैंने क्रूशो कर सीखा है ना इसकी तो बैंड मैं बजाऊंगी भाई उसकी बैंड बज गई क्रूशो कर से ए रुको यार ऊपर बस 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 नीचे कोई क्रिएचर है एक मिनट सर जरा 2 मिनट आई कौन से वाले हैं ये ऊपर है ये नहीं है मेरे पास एक सेकंड गाइस 1 सेकंड अरे यार तो mushroom tea. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Pokemon. Allowed me? kind of Pokemon You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So,
Unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield. Bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso! अच्छा अच्छा Try to make this too easy for me. An intruder! Enjoy suffering, do you? I will make you pay. I won't enjoy suffering and dying, are we? Still no match for me. Potato! Ah, how delightful. अरे यार यार ये आउटफिट मस्त है आई मीन इसका वो हेल्थ ज्यादा अच्छा नहीं है बट आउटफिट मस्त है मेरा लेवल ना मेरे को लेवल अप करना पड़ेगा ऑनेस्टली पता लेवल मेरा ठीक नहीं है मैं जिस लेवल के बंदों से लड़ाई कर रही हूँ हाँ ये ज्यादा बेटर है क्योंकि 20 लेवल के एनिमीज आ रहे हैं और मेरा लेवल लो है उनसे काफी लो है थोड़ा नहीं बहुत लो है
आप ऑलरेडी नीचे कैसे हैं सर? Revelio. कुछ तो होगा यहाँ पे. Confringo. अच्छा. खुल गया. दर्द हो रहा है. Goblin traps. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. हाँ, इतने कासल के नीचे ये क्या खुदाई वुदाई करके रखती है? Ancient power के लिए करा हूँ. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you ये वाला stand to ट्रायल wield कंप्लीट must करके first मैं be साइड fully क्वेस्ट कंप्लीट understood. करूंगी क्योंकि The trials will लेवल ensure लो है that. मेरा. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Hui. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. Revelio. हमारा रहता ही है लोग क्योंकि लोग हमें साइड क्वेस्ट नहीं करने देते. मेन क्वेस्ट पे भगाते रहते हैं. Revelio. अरे यार तुम्हें पता है ये वाला ना करने में मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरे पास वीगन व्हील पोशन भी नहीं है. एक मिनट रुको देखने दो.
अच्छा समझ गई, एक सेकंड, बट इसमें मैं उसे खींच, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं उस वर्ल्ड में जाती हूँ और इसको इधर रखती हूँ, ट्यूबलाइट नहीं बोलने का, ये हिलेंगे ना। Pillar is blocking the path. I'll need to move. Guardian Leviosa. Revelio. Boss fight. Hello, band the pakode. अरे ये तू छोटे भाई क्यों ले आया आपने? I believe I need to proceed to the left here, but how? Baby. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past.
The bridges appear and disappear, depending upon which side of the archway I'm on. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Oh! Oh! Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way through from the other side of this one. चढ़ पाएगी? Is it possible to pull one of those blocks through the archway? एक मिनट, एक में ये छोटा है क्या?
After pulling the block out through the archway, I can place it where they climbed on while on the other side of the archway. ये क्या बवाल है? क्या बवाल है ये? Wingardium Leviosa. मेरा सर घूम गया। गुस्सा क्या है? क्या हो गए खड़े तुम लोग? एक मिनट, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है। अगर ये मैं आई किधर से थी? पता नहीं, छोड़ो, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे जहाँ रास्ता दिख रहा है मैं वहीं जा रही हूँ। फिर से वही दिमाग खराब करने वाला कुछ होगा। 101%, राइट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक सेकंड, ये क्या है? Wingardium Leviosa.
I don't get it. Revelio. I don't understand. नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। अब तो ऊपर भी नहीं चढ़ रही। ना वो अंदर उसके कूद रही है, ना ये कांटे नीचे जा रहे हैं। एक मिनट। और इसे लेकर नहीं, चलो कुछ न्यू करते हैं। अबे बट क्या करना है हराम खोरो, इतना भी मुश्किल क्यों बना दिया? मैं सोने जा रही हूँ, मेरा हो गया। एक मिनट, जहाँ पे मैं आई हूँ वहां पे वो लौंडा गया ही नहीं। निक निक जब हम कुछ बात ना समझा करे तो ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा कैप्स लॉक दबाया करो, लिखा करो बेला लूट के लिए है, बस यहाँ से जाओ। मेरे जिंदगी के 15 मिनट वापस लाओ तुम। मैं बात ही नहीं कर रही, बस ये कोई अभी बहुत जोर की गुस्सा लगी हुई है मुझे। ये क्या है? लूट के लिए, लूट के लिए। अरे तो ये तो बोलो लूट के लिए, वहां से जाओ। मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि मुझे तुम वैसे बोल रहे हो, लाइक जैसे तुम टॉन्टिंग में नहीं बोलते कि लूट रही है और ये सब, वैसे बोल रहे हो मुझे लगा। अरे ओ दिखो तो, अरे पेलो साले को, पेलो 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 और पेलो और गुड वन।
इसमें भी मेरी गलती। हाँ अब आया ना बिग बॉस। अयो अरे यार अरे ये तो डॉज ही नहीं हो रहा। प्रोटेक्ट आई थिंक सिर्फ वो स्पेल से ही प्रोटेक्ट होगा। What a relief. हेवी अटैक यूज करो। करा मैंने ट्राई। मुझे लगा डिसेंडो ही नाम था ना शायद से, वो वाले से कुछ होगा। जादूगरनी लड़की। यस कोई लूट है इधर या फिर मैं अच्छा कुछ यूज अच्छा है पीछे। कोई बात नहीं। अरे सेम ग्लव्स मिल गए जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। क्रिएटर नहीं काम करता इन पर बल्ले। क्रिएटी और
पानी पीना, मेरी पानी की बोतल खाली हो गई है। I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. ये लड़की कुछ तो Please, have a seat. खुरापाती कर रही है। Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. जो रेड लाइंस मार रही थी तुम। क्रूशियो ना? Father hasn't spoken since my brother died. बट वाला स्पेल एक ही है मेरे पास। On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. जब ये चीज उसको पता चलेगी ना, सेबेस्टियन को, वो पक्का ट्राई करेगा। ये टेक अवे पेन वाला, ये वाली चीज पक्का सेबेस्टियन से रिलेटेड होगी कुछ। आपकी एज का 15 नहीं, 19। What have you done? I took his pain. मर ना जाएगा। This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. हाँ तो इस साल 20 हो जाऊंगी, मैंने मना कब करा? लड्डू खाओगे? बेचन के लड्डू। You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. अब ये third trial कराएगी हमसे। It's a pleasure to meet you as well. I am certain तुम्हें एक चीज that you बताऊं are निक, more than capable ये of गेम ना completing my trial. 50% या However, 50% या 60% समथिंग पे जो say, एक्चुअल मेन prepare प्लॉट the है location of your next कंप्लीट हो trial. जाएगा। We क्योंकि trust your बाकी सब तो judgment, साइड Professor मिशंस है ना। Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. मेरे को भी लग रहा था। I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always.
We shall speak again soon. बर्फीला मौसम, ये सब स्किप हो सकता है वैसे अगर मैं चाहूँ तो, बट मैं चाहती नहीं थी स्किप करना बस। भाई ऐसा लग रहा वो जो नहाते वक्त टोपी नहीं लगाता वो ऐसी टोपी लगा के घूम रही है सर पे। नहीं करना। नहीं, मैं वो सीनरी तो मुझे पसंद है, मेरे को आलतू फालतू सीन्स नहीं पसंद जिसमें बग 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 दिखाते हैं, वो वाला नहीं पसंद। जैसे वो टीचर क्लास में ऐसे सिखा रही है, वो सब वाले उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। जैसे अब ये था, बर्फ गिर रही थी, हॉगवर्ट्स दिख रहा था, पूरा मजा आया देख के। I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Uncle, you're back. Nice to see you again. ज्यादा खुश मत हो, आइटम बेचने आए हैं अपने। Thanks for stopping by. I asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. क्रिसमस आ गया क्या? आने वाला होगा। अगर सर्दियाँ आ गई तो क्रिसमस भी आता ही होगा। Deke would like to talk with you when you have a moment. हाय किशन। ये आई ना कुछ ढंग की टोपी। बाकी सब तो बेस्ट ही लगे हुए हैं। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स मुझे सेल करने थे एक्चुअली, जो मेरे पास ऑलरेडी है। मैं हर एक एनिमल की एक एक ही वैरायटी रखने वाली हूँ। वैसे रिलीज कैसे करते थे? कैसे रिलीज करते थे? एच मेरे पास ये नहीं है, इसको डाल दिया। निफलर डाल दिया ना ऊपर। पीसेस लिमिट रीच्ड, क्या मतलब बाकियों को नहीं रख सकती? ये इंक्रीज करना पड़ेगा यार। कोई नहीं। और निफलर, एक सेकेंड रुकना, ये लो। बाकी का है, तुम भी लो। और उधर खेल रहे हैं। अबे उसने ब्रश को अंदर दबा लिया। क्रिसमस पर वो चोगा मिला था ना, बट इसको थोड़ी मिलेगा, वो तो हैरी पॉटर के उसके। बट वो आया कहाँ से था आज तक पता नहीं चला, किसने दिया था उसे। मुझे तो नहीं पता, एटलीस्ट तुम लोग को पता हो तो बताना।
एक चौथा वाला पूरा एनिमल्स के लिए था और ये वाला ट्रांसफिगरेशन के लिए कर देते हैं फिर, या नहीं ये वाला इसी के लिए रहने देते हैं, इसको ट्रांसफिगरेशन के लिए कर देते हैं। ठीक हो गया ना अब? Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... The heck? Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Hobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. बट अभी मैं ये वाला मिशन नहीं करूंगी, मैं पहले रुको जरा ये तो चेक कर लूं। निफलर मैंने छोड़ दिया था ना, ये रह गया था और एक हिपोग्रिफ रह गया था। दो होगा, बाकियों को मैं सेल करूंगी। बाकियों को सेल इन द सेफ जगह पे सेल आउट मारेंगे जहाँ पे वो बोली थी कि वो उनको सेफ रखेगी वो लड़की। It warms Deek's heart. Track undiscovered blue flames from upper Hogsmeade, here I come. एक मिनट। I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome.
Dizzy call with a knapsack. Giant purple toad with a knapsack. Grow and harvest flux. Acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Chinese chomping cabbage, mandrake, and venomous tentacle all at once. They were flux sweet plant. एक मिनट में गलत रास्ते पे हूँ। वो औरत का घर इधर है, बर्फ में दिख ही नहीं रहा है, सब अलग अलग लग रहा है। Revelio certainly never revealed the charm. Pardon me? Might I ask a favor of you? नहीं। Well, what say we show you some of what's available? मेरे पास क्या-क्या Doors है? always open. You be sure to. कैबेज है, ये नहीं है, टेंटाकुलर वाला मैंड्रेक है। Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Oh, me? Did you dress up for me? नहीं। Such a wee bairn gain a thrash into a troll. Oh, I can't believe it. ये जगह मुझे याद नहीं है, पता नहीं कहाँ है। Sometimes it seems all roads lead to My mother used to say I was lazy. Not sure how I'd fare in a little place like this. मून काफ भी है। ये तो दोनों है मेरे पास। यहाँ पे कोई डन नहीं दिख रहा। पफ्स के जाइंट पर्पल टोन। Off on another adventure, are we? यहाँ पे कोई भी मैंने अनलॉक नहीं कर रखा पास्ट में। Who lived here, I wonder?
Now, I'm only trying to help. Everything's all right now. Did he call? Did he call? No, no. Woke up. Go to the. Map mania. These rocks have seen better days. And where did I set my traps? Was it lower or up? One in... Sure there's something. Take that goblin helm! Enjoy stealing hippogriffs, do you? अरे एक सेकंड यार. I shall make much of you. Seems your luck has run out. The beasts are safer now. Revelio.
I've always said that travel broadens the mind. ये ताली कौन बजा रहा है पीछे? पागल है क्या? Oh, it's you! Just the person I need. द मैजिक नीप मेरे पास है, कैसे नहीं है? दूसरी जगह जाना था उसके लिए। एक तो इसके लिए इसमें हर जगह हर चीज के लिए अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। वो वाले सीड मैजिक नीप पे थे। चलो यहाँ से तो मुझे और भी चीजें लेनी है, काम ही आएगा। Greetings. Please take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. लिप्स पे इचिंग हो रही है। What are you up to now? ओ हेलो, पॉट साइज इंक्रीज। How to increase pot size Hogwarts legacy? एक सेकंड, pot size कैसे बड़ा करना है? अच्छा समझी। एक मिनट, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो तो समझ आ गया मुझे कहाँ से करना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है। Off on another adventure, are we? अब मुझे फिर से चीजें करनी पड़ेगी यार। My older sister. You miserable lamb!
can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. और मिशन से करने पड़ेंगे साइड मिशन. और भैया. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. कब गया था मैं? हाँ तो साइड मिशंस भी तो इतने सारे हैं ना. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's जरा not इनकी something बकवास I'd want सुनना to मुझे repeat. बता देना क्या And हुआ. I'm मैं glad पानी we भर did जा it, रही हूँ. because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark क्या arts. बकवास किया इसने? I promise, I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send it out. अच्छा कोई relic खोया हुआ है और ये relic को ढूंढने जा रहे हैं. ठीक है. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot.
You are here. Revelio. Alohomora. Revelio. What do we have here? A demiguise. बस यही था यहाँ पे. अच्छा. एक्चुअली मेरे को साइड मिशन करने के लिए काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने बहुत सारे सीड्स एंड ऑल खरीद लिए, बट मुझे कुछ और भी लेना था उसके साथ में, तो कुछ थोड़ा दिक्कत है. इसीलिए अभी हम ये लूटपाट मचा रहे हैं. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Wonder who lives here. Alohomora. Revelio. My father always told me. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ये अपग्रेडेड है. इधर कुछ है नहीं. हेडवेयर में भी कुछ नहीं है. ये भी ठीक है. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. How nice to see you, my young friend. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. ये by the way one of the main quest ही है. ये technically side quest है नहीं. Why did he challenge? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave.
in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that I mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. इतना सारा रिवेलियो यूज किया अभी तो नहीं आया. Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Revelio. किधर भाग गया लड़का? Seriously? मैं वापस उधर ही आ गई जहाँ से उसका पैर शुरू हुआ था. Revelio. अरे कहाँ है उसके फुटस्टेप? अब तो दिख भी नहीं रहे. खो दिए मैंने उसके फुटस्टेप. ओ मैं भटक गई. मैं भटक गई. फुटस्टेप ही खुआ दिए मैंने. बहुत ही बढ़िया. मतलब अवार्ड तो कोई होना चाहिए हमारी इतनी चूतिया पे के. हाँ ये रहे. मिल गए. कहाँ तक जा रहे हैं? दिखते ही नहीं है ढंग से धूप में. हम वापस चल के उसके फुटप्रिंट से वापस आगे. बताओ. मुझे लग रहा था कि मैं उल्टे रास्ते जा रही हूँ, बट मैंने सोचा नहीं सही जा रहे होंगे. Archie went this way.
I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. What are you up to? Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too? I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. अरे यार थेस्ट्रल नहीं पकड़ने दिया. Seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. अरे क्या है? Follow the trail. Follow ही तो कर रही हूँ. Taking in children now, are we? Take out better not be They have Archie. There can be no mistake. Expulso! Expelliarmus. Pathetic! Expulso! No! Cezio! Protector! Too slow! Incendio! They got what they deserved. Revelio. भूल गई थी टेंट इतने बड़े होते हैं. This tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Revelio. Confringo. कुछ हुआ क्या न्यू? हाँ ये जो नाटी के साथ बातें चल रही है ये साइड इवन दो साइड मिशन है बट ये रिलेटेड टू मेन स्टोरी ही है. You've made a great mess. You will pay for your... You descendo! You'll come to regret that. You've made a grave mistake. Expelliarmus. A lamb to the slaughter. Petrificus totalis. Finite. Petrificus totalis. Will you hold still? Fringo. Hey! Petrificus totalis. Orisco momentum. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Knew you would
Revelio. हाँ हाँ, अरे रोना बंद कर, इतनी देर से बैठा हुआ था तब नहीं चिल्ला रहा था। Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. ताला खोलो भाई। Alohomora. वो रिले की ढूंढ रहे हैं नहीं, बट ये जो ये लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने गए थे ना जब ये हिपोग्रिफ को छुड़ाए थे, तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट। तो काइंड ऑफ रिलेटेड बोल सकते हो स्टोरी से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं ना उन लोगों के खिलाफ। ऐसे ही सेबेस्टियन वाली स्टोरी भी साइड मिशन ही है, बट जैसे वो रिलेटेड है ना ऐसे ही। A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any सोच other रहा था way, छोड़ के Archie. चले जाएं तुमको यहाँ पे। Now, let's get you home. We know a safe way back. मैं ये सारे साइड मिशंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उससे नए नए स्पेल्स और वो सब सीखने को मिलेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ अच्छे स्पेल के नाम पे वो क्रूशियो ही है, सड़ा सा। I mean सड़ा सा नहीं, वो बेस्ट स्पेल है करंटली मेरा, बट स्टिल यू गेट द फीलिंग। रे अटक गई है ये, चल गई। Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Revelio. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. यार मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे वो वाले बंदे का डेन नहीं दिखा। वो जो नाम कैसे बताऊं या मुझे याद नहीं आ रहा, डी से कुछ नाम है उस एनिमल का, उसका डेन नहीं दिखा मुझे, और वो इम्पोर्टेंट है मिशन के लिए। वो शायद से मैप पे देखना पड़ेगा। अभी क्वेस्ट कौन कौन सी है अपने पास? पहली चीज तो इन्वेंट्री में भी चीजें मिली हैं, इन्वेंट्री देख लेते हैं। अरे गियर आई मीन। तो पता है मुझे रास्ते में थ्रेस्टल्स दिखे थे, थेस्ट्रल्स, हाँ सही नाम बोला, सही बोला। वो उनको मैं कैच करना चाह रही थी बट ये दूर जाने ही नहीं दे रहा था। एक मिनट, कॉल
जी रिकॉल यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अभी तक गई नहीं हूँ। रुको, एक और एनिमल पकड़ के आते हैं। उसकी लोकेशन पता चल गई। मैं भी पीऊंगी चाय की बात है। Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. हमें जाना कहाँ है? Somewhere यहाँ पे कहीं है। यहाँ पे आते हैं खुद दिख जाएगा। अरे मैं उड़ नहीं पा रही। एक मिनट। एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। I've always said that travel broadens the mind. यहाँ का रास्ता कैसे है? ये थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। Confringo. I should investigate. ये जानवर को अभी पकड़ लेते हैं, बाद में इतना मुश्किल करेगा। पहली चीज तो मिशन रिलेटेड भी है, क्योंकि वो मेरे को उससे एक स्पेल सिखाने वाली है, बॉम्बार्डो करके शायद से। Rebellion. ये एरिया में मैं उड़ नहीं सकती। और ये क्या है पता नहीं। ड्यूटी क्या ड्यूटी?
अरे झूठी इन द सेंस, ये जो पहाड़ है ना, मैंने इसके ऊपर से झाड़ू उड़ा के जाने का ट्राई किया था। अरे अरे इसको तो डॉज करना भी इजी नहीं है। साढ़े अरे एक खत्म नहीं हो रहा, तुमने दूसरा बुला लिया। एक खत्म नहीं होता है इनका। ये मजाक है? रोल से लड़वा रहे हो? ये नहीं सोचा था उस जानवर को पकड़ने से पहले इतने जानवरों से लड़ना पड़ेगा। तुमको पता है मैं क्या करने वाली थी? मैं एक्चुअली हाँ उसी को मार। एक काम कर, आजू बाजू तो दिखता ही नहीं तुझे।
was my troll. ये क्या है? Never anything interesting around here. Show yourself. If you're there. अबे जा बे छोटे. Chill spells glance off of me. ये ले. एक और ले. अब जब इतना लूट ही लिया है तो मैं क्या कह रही थी, ये बच्चे कुछ 2-4 को भी मार के छुट्टी करते हैं ना. कहाँ हो? मैं हूँ. आजा आजा. लूटिया. एक ही खजाना है क्या यहाँ पे? ये रहा. You almost had a lucky shot. मैं यहाँ पे नहीं उड़ा सकती ना अपनी ब्रूम वरना. But I can fly my hippogriff. आजा. चलो. अबे जब तो टेक ऑफ नहीं कर सकता. Hello, someone's here. One less human to worry about. लेके चल मुझे जल्दी से यहाँ से. Up for a bit of dying, are we? Over here. भाई बचा लिया हिप्पोग्रिफ ने. एक नंबर भाई, कितनों के बीच तक दौड़ा होता हुआ लाया है ये. This looks intriguing. पहले ही कर लेना था ये बल्ले. कोई नहीं होता है. ये लोग क्यों चिल्ला रहा है? How nice to see you, my young friend. ए तो अब वो जानवर कहाँ है जिसको हम पकड़ने आए थे? वो जानवर यहाँ है कहीं पे. तो अभी मुझे और उड़ उड़ के आना है. और उड़ना है.
नहीं उड़ रहा है, इसके ऊपर नहीं उड़ रहा। देखा, एक लेवल के बाद इसकी वो नहीं बचती एनर्जी। एक लेवल के बाद इसका वो पावर खत्म हो जाता है, फिर इसको या तो एक सेकेंड रुको, घूम के तो जा सकते हैं ना। एक मिनट, ये कौन सा डेन है? यहाँ पे किसी का डेन देखा ना मैंने, मैप में नहीं आ रहा अभी। अच्छा ये नहीं नहीं, ये नहीं। नीचे भगा लो। नहीं नहीं, बाजू से रास्ता मिल गया। Faster, Highwing! I mean, not to be rude, he is kind of slow. ये उससे धीरे है अपनी झाड़ू से। It's like a place right out of a storybook. झाड़ू भाग नहीं सकती। हाँ तो मैंने कब मना किया? Revelio. ये क्या है? ओह, What are you up to now? एक मिनट रुको, एग्जैक्ट लोकेशन निकालने दो भाई। डी क्रॉल, ऐसे ही कुछ था ना? क्या नाम था उसका? जानवर का नाम क्या है? डिरी क्रॉल। कोर्स, जिस घर में मैं अभी हूँ उधर से यहाँ। हाँ क्या हुआ? बोलो तो। एरिया अनलॉक मत करना मतलब तुम लोग। ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया।
Do cooperate, won't you? Ouch. अच्छा रुको ब्लू वाली पकड़ते हैं, ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। No need to be difficult, I mean you no harm. Assignment's all finished. Oh, finally. लिटरली धरती के दूसरे कोने में जाके ट्रैवल करके लाई हूँ मैं। Hogsmeade, here I come. Hello there. Come on in. कुछ नया तो नहीं है? नहीं नहीं है। देख लेते हैं एक बार। सब बेकार है, ठीक है। To look at here. Let's look at what we have, shall we? तुप, बिल्कुल तुप। A pleasure doing business with you. Beast feeder नहीं 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 नहीं। With 2 large pots. With a 1000 चाहिए उसके लिए। Potting table with a medium pot नहीं। Potting table with 3 small pots नहीं भाई, large ही चाहिए। मेरे दोस्त के लिए Let me know if तो there's उसका anything aim else I can do to help. उसका aim 12 करने के बाद अब Dressed खाली। to impress, I see. दोस्त के लिए 2 उसका aim 12 का बस अब थाली थाली क्या? या तो हम पढ़ नहीं पा रहे ढंग से या फिर तुमने कुछ लिखा गलत है। क्या लिखना चाहते थे तुम? ट्यूबलाइट क्या? मुझे समझ ही नहीं आया तुम बोलना क्या चाह रहे हो। कभी कभी वो जो अंकल लोग नहीं होते हैं वैसी वाली फीलिंग आती है मुझे। मतलब कि जो कोई जोक मारता है और मुझे समझ नहीं आता। Textbook execution. Bravo. ये देखो ये Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. 'tis. 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 'tis.
done. Now, let us put it into practice, shall we? Okay. Go ahead and try it on the pump. Bombarda. Let's go. Pumpkin के ऊपर use करना है. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell ये just तो like मारने that में मजा every आएगी. time. Assured ये and पूरा in आसपास का control. सब तोड़ दिया. मुझे अभी तक ये वाला चौथा वाला स्पेल यूज में नहीं आया. ऑनेस्टली बताऊं, इससे अच्छा मैं ये रख लेती हूँ. इसके साथ ये वाला स्पेल साथ में बढ़िया. एक मिनट. ये मेन मिशन है, मीट विद पॉपी. ये असाइनमेंट्स है, ये रिलेशनशिप है, और ये अरे ये पहले पता होता ना मजा आ जाती. इससे एटलीस्ट पता चलता जाएगा ना कौन सी साइड है कौन से क्या है. His aim was to pass 12th. Now he is free. वो फेल हो गया. मैं नहीं समझ पा रही तुम्हारे जोक्स, मुझे माफ करो. मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ अभी. गाली आ रही ना निक. गाली आ रही ना. I've always said that travel broadens the mind. Selling the poking spiders. Not worth the trouble, if you ask me. यहाँ पे पास में कहीं वो है. रुको एक सेकंड. अरे पीछे है वो. चलो छोड़ो, बाद में लेंगे. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okay. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Centaur. A centaur. Centaur. Tread carefully.
हैरी पॉटर खेल खेल के मेरी वोकैबुलरी ठीक हो जाएगी, जो भी मैं An गलत प्रोनाउंस entire करती थी. castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. चलने महारानी खड़ी हुई है उधर. Certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. कोई स्टूडेंट तो इन लोग के Perhaps साथ that's नहीं why मिला the हुआ. Centaurs are suspicious. I mean, अगर स्टूडेंट मिला होगा तो फिर वो लोग इन पे शक कर सकते हैं. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. पानी के अंदर कुछ है. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been gone long. हाँ तो ये पागल है थोड़ी सी. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Pelts. Poor beasts. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. ये गॉब्लिन्स जानवर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. कोई जानवर भी इनके साथ मिला हुआ है क्या? No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. I've heard centaurs quieter than you. Nothing. Oh, that warrants a look. It's all about having a keen eye. Take me, for instance. My eye's as keen as a niffler's on a pile of gold, or a nogtail to a sow. No, I'm not bragging. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. थोड़ा सा mistake हो गया है. I think I need to kill them. थोड़ा सा. Is that all they're teaching in school these days? Recruits don't go down easy. If I have so much as a scratch on me, you'll be sorry! Enough! Now put me! You will not survive this! Quickly! You'll regret that! No! Merlin, you'd
think they were guarding the Minister for Magic himself. मैंने ब्रिज तोड़ दिया, अब उसको जोड़ना पड़ेगा. Reparo. Revelio. और होंगे अंदर. What in Merlin's name? Dragon? Are those dragons? ये तो वही ड्रैगन है जैसे लड़की पे जब अटैक हुआ था उस वाला. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. एक चीज बराबर देख क्या? What I wouldn't give to be a demiguise right now. You'd better be a beast. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Someone's here. I sense it. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ranrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding. मेरे को बोलना ही नहीं. क्या हुआ? तुमने वो कर दिया, डिलीट किया तो मैं सुन ही नहीं पाई. Did you hear those goblins? Ranrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? ये पेलो सालों को तुम नहीं पढ़ो बल्ले. पढ़ो कैसे? तुमने रिट्रैक्ट कर दिया जब? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Revelio. Alohomora.
All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. You're the one we're looking for, ain't you, poor friend? To get Lancool. You've made a mistake. What there? Stop right there. Give that back. डोंट से ड्रैगन को पेट बनाने वाले आई डोंट नो This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. एक गया 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 उड़ जाएगा This way. मजा आया That
was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. वो जो अंडा है I don't think वो she knew they शायद had से her इनको egg. हेल्प करेगा. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. ये करके मजा आया. क्वेस्ट पैसे ही नहीं है मेरे पास. अच्छा अब आ गए होंगे. अब आ गए होंगे पैसे मेरे पास. आइटम आया ना बहुत सारा नया. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. अरे यार सारे अनआइडेंटिफाइड हैं. पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. एक मिनट. पहले एक बार आइडेंटिफाई करके आ जाते हैं अपने आइटम्स को. फिर उन्हें सेल करके सेकंड वो एक मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. और मेरे पास जानवर भी तो है. जानवर भी रिलीज करना है. एग अभी है. एक सेकेंड. बट ड्रैगन एग ऐड नहीं कर सकते ना. अब 3-4 चीजें करनी है. पहले तो यहाँ जाना है. दूसरी चीज गेयर. ये लॉक्ड है. आठ घंटे होने वाले ना ये गेम खेलते हैं. 8 घंटे होने वाले. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. It's always nice to see a familiar face. पहले तो आप ये सारा सामान पकड़ो. अब हमें क्या चाहिए था?
Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Who needs keys when you know Aloha more? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Acquire and use an invisibility or thunder brew potion, right? Invisibility or thunder brew potion. Saved me a lot of time and trouble. Invisibility तो ये रहा, बट इससे आसान है इनको खरीदना नहीं. A wise decision. Thank you. Off on another adventure, are we? नहीं. हमने पॉट टेबल तो ले ली, बट लगानी कैसे है? अपने रूम पे लगेगी क्या? एक मिनट. अच्छा अपने रूम पे लगेगी. यहाँ अंदर और जगह है, यहाँ लगाते हैं. चलो दीदी. तुमको क्या काम था? ये क्या कर रहा है? Tubbs Cave shouldn't be terribly far. क्या अभी भी अवेलेबल है? My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. इसमें अभी 15 मिनट है ना, तब तक दूसरा कुछ काम कर सकते हैं. Complete Professor Weasley's assignment.
Collect the field guide page in the underground harbor. Collect the field guide page from the book on intermediate transfiguration in the library. अरे Revelio. So this is the underground harbor. The grey Rosina Ravenclaw. I'd say नहीं, hello, but कोई she और है. doesn't seem particularly social. Revelio. Stirred clockwise. What are you up to now? Revelio. Bombarda. Confringo. Inexcusably rude. Revelio. That book Professor Weasley asked. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Lumos. Revelio. Lumos. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if
You humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the नहीं answer was गलत है false. अगर वो सही While होता तो Polyjuice हरमाइनी बिल्ली potion बन जाती can ना be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. इधर के 5 मिनट में आया खाना लेकर इसको कुछ जरूरत से ज्यादा क्लासेस नहीं दे रखी है मतलब इसको टेक्निकली सारी ही क्लासेस करवा रहे हैं Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do.
Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and, food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Levioso. I remember Armide mentioning something about gobbledygook. Alohomora. Revelio. Alohomora. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio.
कौन सी जगह आ गई मैं? Lumos. Wonder how well our professor. Brilliant! Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. पंद्रह के अलावा हेलो कैसी हो बल्ली? कुछ नहीं. Oh, it's you! Just the person I need. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. 20% को Well, चाहिए if होगी there's बस. one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and तुम्हें it's all stream in नहीं the करनी? wrist. Let's see you give it a go. थक गया हूँ, मेरा मन तो है बट थक चुका हूँ. You will want... तुमने काफी दिनों से अब स्ट्रीम नहीं कर रहे हो. मैं करता हूँ, कल से करता हूँ. Requesting your help. देखता हूँ. Meet me outside of Feldcroft, near the Catacomb. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind. Please. Flipendo, look at that. You're a natural.
प्रोफेसर दिखने में तो अच्छी है वो। That's all that matters. Just the person I need. I'm one venomous pimple on your pillow, and you don't soon forget. किसके असाइनमेंट बचा? Let me hear laid on the relic that could help Anne. Thunder. थंडर ब्रू पोर्शन और इनमें दिखने में अच्छी तो हरमाइनी थी। ये सारे के सारे क्या कहते हैं, एमा वॉटसन के फैंस। थक गया हूँ बड़ो साइड मिशंस कर करके। गुब्बारे कहाँ हैं? हमको तो दिख नहीं रहे। Revelio. There we go. और दूसरा बलून वाला कहाँ? प्रैक्टिस फ्लाइंग नियर कीन ब्रिज टावर। अच्छा, कीन ब्रिज टावर इज मेरे को अब इतनी अच्छी नहीं लगती, छोटी अच्छी लगती थी। मैं और से अच्छी लगती है, मायने लगते हैं, वही दो सही है उसका। मुझे जी नहीं पसंद है। Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. I'm a जिनी फैन। वैसे जिनी मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बुक्स में बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसका, इसलिए। मैं इस वाली मतलब मूवी वाली जिनी को बुक वाली जिनी से मिला देती हूँ ना, इसलिए मेरे जिनी अच्छी लगती है। अयो ये रुक 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 रुक। हाँ That's it. तू लिखित इंडियन को जानता है? स्पेल इतना ऊपर क्यों सिखाने लेके जा रही है वो? नेवर माइंड, वो स्पेल नीचे सिखा रही है। बट ये चूतियों ने मेरे को ढंग से मैप, यार मैप इसका थोड़ा सा। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, ये वही जगह है क्या? अच्छा
my entire family. एक मिनट, कहाँ जाना? वो मेन मिशन था, ऐसे जिनी भी अच्छी लगती थी हैरी और उसका। ओके, वो सोचो उसका भाई बगल में खड़े होके देख रहा था। Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. इसमें होता क्या है? I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. That's it. Keep it up. हाँ वही बोला था बेचारा रोहन भी इजीली। ओके, ये सुन के ज्यादा बुरा लगा। अब कौन से असाइनमेंट्स बचे हैं? वो पोर्शंस वाला ही बचा है शायद से, ये वाला ना। इनविजिबिलिटी पोर्शन तो हम बना लेंगे, थंडर ब्रू पोर्शन खरीदना पड़ेगा। पहले इनविजिबिलिटी पोर्शन बना लेते हैं, थंडर ब्रू तो मिल ही जाएगा। रहने दे, उसको पता ही नहीं चलता था, वो तो बेवकूफ, उसे समझ ही नहीं आता था। वो तो बेचारे इतने एक दूसरे को ताड़ा रहे थे, वो तो कुकीज लेके बीच में बैठ गया था। क्लासरूम यही है ना? नहीं, क्लासरूम इधर नहीं है। क्लासरूम ही भूल जाती हूँ भाई। Hello, Hamora. रोहन वेजली मेरी तरह एकदम। क्या मतलब प्रोफेसर के ऑफिस में कुछ लूटने लायक नहीं है? अच्छे Professor, I saw an aura badge on your desk. May I ask about your time as an aura? Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class.
I enjoyed a great deal of success as an aura. However... May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. A potion and a poison may be a mere breath. Well said, Professor. कैसी हो बल्ली? कुछ नहीं, बढ़िया हूँ। गेम बढ़िया चल रहा है? हाँ। तो ठंड लग रही है बहुत आज, यार बहुत ठंड है बाहर। बाहर गया, मुझे तो नहीं लग रही। मेरी गांड फट गई। इतनी सस्ती है। बेला, तुम इतनी टॉक्सिक क्यों हो जाती हो बात बात पे? मैं पैदा ही टॉक्सिक हुई थी। डॉक्टर ने तो टॉक्सिक हुई है। हाँ। ये चल क्या रहा है? अरे मैं अलग-अलग मिशन कर रही हूँ। सोनिक को पता है आज की पहली गाली स्ट्रीम पर उसने ही दी है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सॉरी निक भाई, सॉरी निक भाई, गलती हो गई। बदमाश छोरा, बदमाश छोरा। नेहिल ने कोई रिकॉर्डिंग में मैसेज भेजा था। आज मुझे नहीं लगता मैं TKR पे करने वाली हूँ। मैं सिर्फ हैरी पॉटर खेलता रहूंगी, खेलते रहूंगी, खेलते रहूंगी, खेलते रहूंगी। Pleasant enough little place. जी क्या आलू सोनिक देख लो रुचि तुम्हारे बारे में क्या कह रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। और सोनिक की गांड एक आलू टिटी के बराबर है क्या? तो तुमने देखी है? क्या पता तुम किसको दिखा के आए हो? पहला 2 मिनट रुको, थोड़ा मामला सीरियस है बल्ली। मैं म्यूट हूँ, ठीक है? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic Oh, by the way, during an मैंने इनकी assignment to study conversation skip करना सीख sarcophagi लिया। in this catacomb. कैसे करते हैं? From what I read in a बस report by the ये student, they right weren't click। permitted to take it with them. So I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. जो स्नेहिल को कॉल करना था, मैं आलू टिटी सर्च कर रहा हूँ। I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. तुम्हें आलू टिट्टी By नहीं the way, पता? Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? Are you even my loyal subscriber? Ominous would be livid if रिशु he knew जल्दी what we were बताओ about to उसको, do. मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। I'll be interested to compare what lies अरे inside to basically what I've read जैसे about this catacomb. तुमने सिड का सुना होगा ना, सिड को लोग बोलते रहते हैं सिड लव्स मिल्क और ये सब। ये सोनिक ने अपना शुरू किया था। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ सिड का। सोनिक ने तो ऐसे ही शुरू किया था कि उसको आलू टिट्टी पसंद है।
तो फिर वो हम लोग ने उसको वो कर दिया कि जब भी सोनिक का मेंशन होता है वो बात ले आते हैं हम लोग. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Accio! Opening all of these is tempting. We're here for a reason. Rebellion. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Bombarda! Confringo! Wingardium Leviosa. Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Rebellion. Hello Zapter, how are you? Still playing Valo? We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Yeah. What rank are you right now? I started playing a lot of different games. So I'm not really playing Valorant right now. Watch your step. I nearly slipped there. Oi. Fringo. All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Rebellion. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Only this one here? Confringo. I just play 1 or 2 matches. Okay. I'm just trying out different games. Before I was playing Assassins, now I'm playing Hogwarts Legacy and also trying TKRP with everybody else. So Valorant ka time kam milta hai. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus.
Seems odd. There's something here by the altar. Bombarda! Okay, wait. Revelio. What did you find? Battle, lots of bone battle. What your RP name? Bella Kumari. I mean, just say same name only. Just a little different. We've made it this far, but clearly we have more to do. I need to find a safe way across. Lumos. Lumos. How to get up? How to go up now? Bombarda! Revelio. Okay, I can make something. Bone bridge complete. Revelio. Wait, what Sonic name? Sonic Sharma. I mean, we didn't change our names. Basically, it's same only. Revelio. Arre, we are at the same place again. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory.
तुम तो कुंवारी नहीं हो. कुमारी, Looks like not part of a student's कुंवारी. diary. It mentions plans to return to the मैं अभी relic भी and वहीं conjuring अटका हुआ barricades using आलू. bones. Of course. The अरे student summary referenced a space beyond the Great एक नहीं Room, बताती. which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You Really? We need to focus on moving beyond this room. Of course. I'll start to search for those barricades. अरे Brilliant. पागल आदमी, खुल चुका है There's दरवाजा. अब more to क्या this सोच than रहे even हो? I imagined. बेसिकली सोनिक का ये सीन था कि उसके जब बाहर आलू टिक्की वाले भैया आते थे ना, टिक्की वाले, टिक्की तो जानते हो क्या आलू की, वो वाले भैया आते थे, तो हम लोग ने उससे टिक्की का कुछ और बना दिया, समझे? अब Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's तो an दूसरा हम लोग unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn हाँ बिल्कुल सीखना चाहेंगे. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your टिक्की life shouldn't be क्या नाम unforgivable. बदल दिया? You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. एक और हम लोग ने खतरनाक वाला स्पेल सीख लिया. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. ओ मकड़ियाँ. That spell got my attention. ये भी ठीक है. एक सेकंड रुको. इस वाले स्पेल को इधर डाल देते हैं, इस वाले को इसके साथ रख लेते हैं, या नहीं? रुको, नहीं यार, ये वाला इम्पोर्टेंट है. बम्बार्डा वाला चेंज नहीं कर सकते. Bombarda! Confringo! Bombarda! और Another मकड़ियाँ. barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio! एक सेकंड, ये वापस चले गए. पहला Guardian Leviosa! या तो मैं तेज तेज करूँ. 1 2. नहीं, ऐसे नहीं होगा. पहले इसे नहीं, अंदर जा रहा है. एक मिनट, मैं उस पे फोकस ही क्यों कर रही हूँ? Guardian Leviosa! मेरा रास्ता तो बन गया ना, मैं उस पे फोकस ही क्यों कर रही थी, मैं बहन. और एक सेकंड, थोड़ा लूट पाट तो बनती है यार. Bombarda! अच्छा, यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, समझ गए. यहाँ तो जा सकते हैं. Confringo!
can make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Revelio. ये छोटा करके मारना मस्त था ना भाई, मकड़ी की तरह, एक्चुअली में मकड़ी की तरह मसल दिया उसे। कुछ अच्छा हमको दोगे या नहीं दोगे? तब से बेकार चीजें ही मिली जा रही है। I mean, vegan and wield is fine, ठीक है ये तो। और ये क्या है? Revelio. ठीक है, इतना काफी है। और ये क्या? Bombarda. This catacomb has suffered decay, just as the student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. एक और अनआइडेंटिफाइड आइटम, अच्छी बात है। चलो, हो गया यहाँ की लूट। Revelio. मुझे एक्चुअली पैसे चाहिए, मैं इसलिए तो नहीं लूट कर रही हूँ। पैसों से और ज़्यादा चीज़ें लेके स्पेल्स करने हैं। अच्छा ये एक सेकंड, नहीं ये खोलना ही पड़ेगा, बिना उसको खोले काम नहीं बनेगा। एक मिनट, अच्छा मैं समझ गई। पहले उसे खोलो और उन्हें खोलो तो उससे ये खुलेगा। ओके ओके, यहाँ पे इसका सिंबल है। अच्छा 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 अच्छा, वो गोल वाला कहाँ है? गोल वाला, गोल गोल गोल, ये रहा। इसको खींचो और इसके साथ तो ये वाला। अब ये वाला खींचो फिर से, और उसके साथ ये वाला, वो खुलेगा। खुल गया। You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place.
Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. भाई तुम हार मरी बड़ी जल्दी मान जाते हो. The relic contains the mineral portion not only wizards can buy the world, but the dark sacrifice involved to realize it intent may be to grant it. No one, please do not remove this relic. Sebastian, the relic! Look! Could it be? हाँ भाई वही relic है. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, भाई ये मरवा के I'm मानेगा. taking it. Let's get to Feldcroft. ये मरवा के I मानेगा. must keep this relic secret. Especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. तब बात Sebastian, हुई थी relic please, के. leave the relic alone. तुम तब से We तुम can find थे another way अच्छा. to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, भैया उसको कुछ please take करना a step दे. back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. Real में And मेरा if हालत nothing will बता. change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. ये अपनी बहन के साथ कुछ गलत न कर दे. Oh no, this isn't good.
What is it? यहाँ पे अटैक हुआ. Smoke over there by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I've been fighting since before you were born. तुम्हारी तो बैंड टको. You won't stop me. मैंने तो बंदा ये गलत है नहीं करना चाहिए लेकिन रोक भी नहीं सकता वो. इसकी बहन के पीछे लोग आए हैं. को मार डाला. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. It might be best to let him calm down a while. You may be right. Very well. Probably best if I get... जा रही उसके अंकल से बात करने. Revelio. अरे यहाँ पे कोई वेंडर है ही नहीं. थोड़ा बाद में ही करूँगी. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you...
Why, Sebastian? Not sure how I'd fare in a little place like this. Repairer. ये वेंडर उसी टाइम पे क्यों भाग जाता है जब मेरे को उसकी जरूरत होती है? मैं ये गेम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कर दे तो पता नहीं, मे बी चांसेस है। Doesn't get any more cozy than Hogsmeade. लॉक्ड है तो देते क्यों हो भाई? आई मीन जबरदस्ती मैं भी ले ही आती हूँ, उनकी भी गलती नहीं है। सारे बेकार ही हैं, कोई भी बेटर नहीं है जो मेरे पास अभी है उससे। आ जाएगा मेरा पोर्शन, आ जाएगा उतने में। Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. अब मुझे थकान हो रही है, 9 घंटे हो रहे हैं, 10 घंटे होने वाले, थकान हो रही है धीरे धीरे करके। आई थिंक 12 बजे तक बंद कर दूंगी। What did you think you were doing? That owl has been in our family for 30 years. And you thought it would be clever to transfigure her into I hear the elves have had to transfigure Goblet in the castle looking for... Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We'd just lost our parents, and we were packing up to go and live with Son. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with...
Be careful, Sebastian. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you. I'll send you an hour when I have news. Balli catchy, Balli catchy, I've always said that travel broadens the mind. एक बात मानोगे वल्ली, तुम बोलोगे कि चल वो बंद करो, मैं नहीं करूँगा 12 बजे से पहले। क्यों? क्यों? मैं करूँगा, हाँ। बल्ली, क्यों इतना बता मेरे पे टॉर्चर करोगी? अच्छा 10 घंटे से मैं कह लूँ, टॉर्चर तुम हो रहे हो, ठीक है? मैं टॉर्चर से कम भी नहीं हुआ हूँ। हम नहीं मानते। मत मानो। मैं खांस खांस के मेरी ना गांड फट गई है और मेरा सीना बाहर आ गया है। फेफड़े बाहर आ गए हैं। I mean। अब तुम्हारी इतनी सस्ते तो क्या करा जाए? क्या मैंने कुछ कहा? Yes। भाई 6:30 बजे काम है, काम करना ब्रो। अभी सो जा, बाद में आके इसकी स्ट्रीम चेक कर लियो उधर से। 1 घंटे की है, देख लियो, जो चैट करना है उसको इंस्टा पे लिख दियो। यस, लाइव फीडबैक जैसे कोई देना। Off on another adventure, are we? Gobbledygobbledygoo। वाह सोनिक वाह। क्या हुआ? वो बोल रहा है ऐसा। थैंक यू ब्रो। हाय। आई नो मैं इंटेलिजेंट हूँ भाई। कहाँ जाना है? Boo. Hello there. Perhaps you can help me. I suppose in all fairness, इसके जैसा दिमाग किसी को ना मिले। अरे कितना ऊपर जाना। अरे बाप रे कितना ऊपर। Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine.
Would you be willing to help? Of course! How exciting! I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. साइड मिशन नहीं करोगे ना बल्ली? ये तो मेन मिशन का पार्ट है। गॉबल्डीगुक सीखना। तुम ये कर सकते हो, मैं 12 बजे के आसपास स्ट्रीम ऑफ कर दूंगी, तो तुम यहीं से कल कंटिन्यू कर सकते हो। 2x पे चला के या फिर स्किप कर करके पूरा खत्म कर सकते हो देख के कल। Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. अगर कुछ important होगा तो मैं बता दूँगी. Determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon.
Revelio. Revelio. पता नहीं कैसे करना है वाला। पत्थर कहाँ गया? Revelio. वापस चला गया? अरे एक मिनट। Levioso. Accio. अरे यार बाद में ही बनना पड़ेगा। एक मिनट रुक। ये तो मैं करके रहूंगी। Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. क्योंकि एक बार हो गया तो हो गया, फिर ये नहीं होता। This could prove dangerous if I'm not careful. Bombarda. Accio. Merlin himself would be proud. एक मिनट, क्वेस्ट फिर से वहीं से शुरू होगी? अरे एफ ओके, ये तो आई थॉट जहाँ से छोड़िए वहां से शुरू होगी। ये तो चूतिया पर। कोई नहीं, स्किप हो जाएगा।
ये रहे अमित भैया. Hello there. Hello, Amit. Do I... It is. Lord Gok is waiting. करे अब ये सब अनलॉक कर रखे थे. What are you up to now? Greetings, Lord Gok. Amit and I can do this. चलो शुरू. I shall see you soon. The door is looking at us. Don't wish to be seen, do we? चल एंट्री हो गई. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Confringo. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. What? I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. I'll be quiet. Swan. Who's that? Matter of time till Ranrock sets things right. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. अरे छोड़ो भाई. No! Just find them! You are postponing the inevitable! Let's get it. What's a human doing here? Descendo!
door. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Yes, of course. We won't get through as long as we can be seen by that eye. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. बढ़िया. क्या हम कौन? एक मिनट. शायद मैं दर्द हो गया. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. ऊपर ही बंद है. Revelio. मकड़ियों पे तत्सम भरना शक्य गुजरा. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Yeah, pancho. क्या? Notes क्या? अच्छा नीचे वो है. दूसरी तरफ एक और रास्ता गया है. Revelio. वो खतरनाक एरिया है. पर जाना पड़ेगा उधर. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. ये ले. ये लो.
रहा है दोस्त? अरे You're so clever. Dead. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo! ये देखो कहाँ घूम रही है अंदर। Revelio. छोड़ो यहाँ से निकलो। अब ये कहाँ आ गए? I'm quite good at sneaking about. You'll see. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. अरे ये तो फालतू जगह निकली। यार इनसे लड़ना ही पड़ेगा, इनसे छुप के जाना पॉसिबल ही नहीं होता, मारना मुझे ज्यादा इजी लगता है इनको। ये लो। Oi.
should be the last of them, Amit. Revelio. Revelio. क्लियर है ना? चलो Clever. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Exit कहाँ है? One less human to worry about. ये एग्जिट नहीं है, एक सेकंड, ये एग्जिट नहीं है, दूसरा रास्ता है। अबे ये भी एग्जिट नहीं है, एग्जिट उधर ही से है क्या? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. चलो बाहर आ गए। बारह नहीं बजे ना? ये आखिरी मिशन है, इसके बाद मैं जा रही हूँ। Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah.
The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Could it be a Merlin trial? Rebellion. Bombarda. Accio. Confringo. Rebellion. Wait. Confringo. Oh. Confringo. It's so tricky after all, Merlin. कितने कंप्लीट कर लिए मैं तो गिने भी नहीं.
और ओपी पोपी मैन क्या? नहीं। ओके, और बताओ क्या हाल है बेम? नहीं, बाल बच्चे बढ़िया। ऐसी बातें नहीं पूछते, गंदी बच्ची। अब ये सब भी हो गया। मैं कहाँ जाना था? ऑक्समीड इसके पास। पोपी 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 पोपी। मैं कैमरा नहीं बस Hogsmeade, here I come. खुलेगा क्योंकि उधर लगा हुआ है। और तुम्हारा उधर ना बट लगा नहीं हुआ है इतनी देर से। डीएक्टिवेट नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो अब मैं क्या करूं? नहीं चल रहा तो बताओ क्या करा जाए? Saved me a lot मैंने of उधर time and डीएक्टिवेट trouble. कर दिया फिर भी। What can I do for you today? आप अंकल ये सारा सामान ले लो। और हमको ये दे दो। A wise decision. Thank you. Aloha Mora. दूसरी क्या थी? अच्छा यही था। एक असाइनमेंट है मेरा कहीं पे, क्वेस्ट। अब मैं बेसिकली साइड क्वेस्ट कर रही हूँ, मेन क्वेस्ट छोड़ दी मैंने। ये वाला था ना, पोस्टन अगेंस्ट एनिमीज। एनिमी वाला इलाका ढूंढना पड़ेगा। Invisibility potion. पी लिया। बट एनिमीज कहाँ हैं? I know a Merlin trial when I see one.
Lumos. अरे यार, अरे अवेलेबल नहीं है। Castle must have been quite stately in its time. ओह क्या हुआ? Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all... Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my talent and resolve are a potent combat. Thank you, Professor. Don't... Now, let's... Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. The art of potion making is delicate, and as some... Very good. It seems you have a grasp. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake, and it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. अब I am happy. असाइनमेंट भी कर लिया है। ये सब तो फालतू है, ये तो करना ही नहीं है। ये दो करने हैं बस। चलो सेव करके मैं जा रही, आज के लिए तो काफी है। $15 और प्रोग्रेस कितनी हुई मेरी अभी तक? 25%, नॉट बैड। सही स्पीड पे हूँ मैं, हो ही जाएगा कंप्लीट। अभी हम निकलते हैं। एग्जिट, बाय बाय गाइस।